Welcome to the PIDE webinar. Let's begin. My name is Nadeem Haque. We are going to begin the PIDE webinar. PIDE webinars happen every 2 or 3 days a week. We do that deliberately because we want to understand what's happening in the country as well as what's happening outside. और हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन किया जाए. हुकूमत पता नहीं क्या चीजें बना देती है बगैर किसी को बताए. एक लॉ पास हो गया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो मेरा ख्याल किसी ने भी नहीं देखा. रात के अंधेरे में पास हो गया. इस पे कोई डिबेट नहीं हुई, इस पे कोई बात नहीं हुई. हम आज कोशिश कर रहे हैं कि इस पे बात की जाए. पीआईडी को, बल्कि मेरी हुकूमत को इल्तिजा है कि पहले पीआईडी को बताया जाए, पीआईडी को डिबेट करने दें. पीआईडी जैसे इदारों को चले, हमें ना करने दें, बाकी यूनिवर्सिटी को करने दें. ये क्या वजह है कि कोई भी लॉज, जो भी चीज़ें पास होती हैं बगैर यूनिवर्सिटीज़ के पास होती हैं. मैंने कल बात की एक आला अफसर से. उससे मैंने पूछा तुम कितना टाइम लगाते हो वर्ल्ड बैंक एडीबी से? वो कहता जी तकरीबन 50% मैं उनके साथ लगाता हूँ. कहता, मैंने पूछा कितना टाइम हमारी यूनिवर्सिटी? कहता जी मैं कभी मिला ही नहीं अपनी यूनिवर्सिटी से. वो मुल्क क्या तरक्की करेगा जहाँ के जब कोई नई चीज हो, हुकूमत जब कोई नई पॉलिसी निकाले, जब कोई नई चीज करे तो वो अपने लोगों से बात ही ना करे, अपनी यूनिवर्सिटी से किसी से बात ना करे, और वो सिर्फ लेंडर से बात करके, जो लोग पैसे देते हैं उनसे बात करके करे. तो यानी कि हमारा फिर वोट करने का तो फायदा कोई नहीं ना. वोट तो फिर लेंडर से करवाएं, मेरा ख्याल है बेहतर वो बात हो जाएगी. खैर आगे चलते हैं जी. रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पे बात करते हैं. ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके ऊपर बात करना चाहते हैं. हम आज देखना चाहते हैं. हमारे साथ बहुत आला मेहमान है, पीआईडी के अहमद, वकार, कासिम, जिस पर इन्होंने इसको थोड़ा सा देखा है, वो थोड़ा सा सेट करेंगे डिस्कशन. फिर हमारे साथ है शाह जहान साहब, डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो मेरा ख्याल इस लॉ के साथ एसोसिएटेड है. उसके बाद हमारे पास हैं डायरेक्टर जनरल कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिनको भी पता होना चाहिए जिन्होंने ये लॉ बनाई होगी. उसके बाद हमारे पास हैं तनवीर मुगल साहब, चेयरमैन रियल एस्टेट क्लब. इनसे पूछना चाहिए कि ये क्या है, बिजनेस क्या है रियल एस्टेट. फिर उसके बाद तैमूर अब्बासी साहब हैं, ये ग्रुप डायरेक्टर इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज. पहले मैं ये कह दूं कि हमारे मुल्क में रियल एस्टेट की बिजनेस वो इतनी ख़राब है कि इस पे किसी को बहुत तहकीक करनी चाहिए. बहुत ही गंदी बिजनेस है जो पूरे दुनिया में इतनी अच्छी रेगुलेटेड है. रेगुलेटेड रॉन्ग वर्ड टू यूज. इतनी अच्छी तरीके से पूरी दुनिया में चलती है. जहां एक गैंगस्टर माफिया बना हुआ है रियल एस्टेट. व्हाई? somebody should explain that to us. 75 years later we have qabza mafias, we have housing societies. This is the only country in the world where you have a judicial colony, where you have a sui gas colony, where you have a police colony. मतलब किसी दुनिया में मुझे कोई और मुल्क बता दे, मैं मान जाऊंगा जहां ऐसी सोसाइटीज हो. अफ्रीका में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में. ये पाकिस्तानी इन्वेंशन है जिसको हमें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि हमने इतना फजूल निजाम बनाया. जहाँ जजेस कॉलोनीज बना रहे हैं, एम्बेसडर्स कॉलोनीज बना रहे हैं, पता नहीं कौन कौन बना रहा है, मुझे कोई समझ ही नहीं आ रही. ये रियल एस्टेट बिजनेस है या क्या है? खैर, आई विल टॉक लेटर. ऑल द बेस्ट जी वकार साहब. लेट अस स्टार्ट. लेट्स सी व्हाट दिस रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इज. Thank you so much, Dr. Nadeem, and I'm grateful to today's panelists for sparing their time. I'm going to present very briefly the evaluation of Real Estate Regulatory Act that we have done at PIDE. So, can you see my presentation? Okay. The National Assembly of Pakistan passed the Islamabad Real Estate Regulation and Development Act in 2020. The goal of the act was to establish the Real Estate Regulatory Authority and that will regulate and promote the real estate sector in Islamabad. The protection of real estate buyers' interest is recognized as the best strategy to achieve the regulation and promotion goal. And to ensure the protection of buyers' interest, the specific objectives opted in the Act includes
bringing efficiency and transparency in transactions, regulating mega projects, and resolving disputes swiftly. Thus, prior registration of the real estate projects, developers, agents with RERA, with digital access of RERA database, and the establishment of an appellate tribunal for swift dispute resolution was marked as the needed approaches for the realization of the objectives. The PIDE RERA evaluation report revolves around the fundamental point, and that is, would the proposed RERA be able to promote the real estate sector or not? However, experiences from other sectors indicate that the real estate sector promotion through the establishment of an authority would perhaps not achieve the desired objectives. Although the RERA bill to establish the authority has been passed, however, both the real estate authority and appellate tribunal are not established yet. Therefore, evaluating the role of RERA Act to promote activities in real estate sector may be too early to pursue. Nevertheless, one can foresee the likelihood of the realization of the objectives by juxtaposing the overall relevance of the mandate assigned to RERA and appellate tribunal. In this evaluation report, we particularly focused on relevancy criteria to assess the prospect of real estate promotion through the RERA Act. And our evaluation mechanism actually based on these four considerations. The first one is related to whether the proposed RERA would be able to eliminate real estate market inefficiencies. And secondly, what are the prospects that the RERA will address prevailing problems in the real estate sectors? And thirdly, how much extra regulatory burden will this RERA bring in the market? And lastly, do we really need to establish a new regulatory authority to promote the real estate sector? So these are the basic four considerations on which our evaluation report based. And coming to the first consideration, that is the inefficiencies that prevails in the real estate market. As we highlighted in PIDE reform agenda for accelerated and sustained growth, that the real estate market in Pakistan marked with insufficient information related to price and characteristics of the property, and land titles and rights are very vague. Dispute settlement process are lengthy and time-taking, and transaction process is cumbersome. So these are the key inefficiencies that exist in the real estate market. And these inefficiencies extend the opportunities of fraudulent transactions, deceitful behavior of agents, and prolonged litigations. If we evaluate the proposed RERA in the light of well-functioning market characteristics, then one can foresee, although the proposed RERA Act has addressed some inefficiencies, however, the approach is restricted with some inefficiencies left unaddressed. For instance, the Act remains silent on the key issue of price misinformation. One potential way to address this issue could be to add an additional clause related to the provision of price information. Since the Act proposed that the RERA will host a web page where detailed information about the real estate agents and developers will be shared, we propose that the web page can also be used to list the transaction prices by making it obligatory to put up the transaction price for a certain period before registration of the transactions. And we at PIDE are also developing such kind of web listing mechanism and will be presented in the coming days. On the issue of defined right, the Act has pointed out that RERA will facilitate the digitization process of land records. However, having only digital land records may not be the ultimate solution of the problem, particularly if we take into consideration the practice of digitization performed in provincial jurisdictions. And to ensure rights are clearly defined as well as enforced, the proposed RERA has to go beyond just record digitization. The Act has also overlooked the importance of technology. Transaction technology is key, and the use of technology will not only bring transparency in the transactions, but we believe it will also enhance the velocity of transactions.
And starting with automation and moving towards blockchain technology would address vague and unenforced right issue as well. And now coming to the second consideration, that is, would the proposed RERA Act be able to address the prevailing problems? And first, we have to identify the problems that prevail in the real estate market. For that, we surveyed the real estate market in Islamabad. The survey involved in-depth interviews with key stakeholders, and these stakeholders includes real estate developers, real estate agents, agencies, marketing agencies, buyers, sellers, and real estate lawyers. The leading concerns that emerge from this short survey are given in this slide. The top identified problem is transparency issue. The second is inactive behavior of CDA, and transaction process is time consuming, and so on. And the survey also highlighted the one issue that stakeholders face is, especially buyer face, is non-professional behavior of real estate agents. And now if we compare the proposed RERA Act and what solution they tabled for these prevailing issues, one can see among the issues, problems identified, one particular problem that has been neglected by the Act is formal training of real estate agents. The RERA must consider the necessity of formal training of the real estate agents to develop trust and bringing transparency and efficiency to the sector. Similarly, the Act also has also not addressed the unique practice of file trading in Pakistan, which is one of the primary source of fraudulent transactions. Since file trading refers to the act of buying a document of a plot without possession and allocations, because the housing society has not yet to be developed, people buy files due to perceived high returns, and these files keep changing hands even without ensuing any actual activity on the ground. Resultantly, the developers have no actual motivation or incentive to develop the society within the promised timeline. And coming to the third consideration, that is what would be the regulatory burden this RERA will impose on the market. The establishment of RERA and the appellate tribunal through the Islamabad Regulatory Act will surely increase the regulatory burden in the real estate market. The main source of burden is the increase in the compliance cost, since Act made it mandatory for developers and agents to register their projects and themselves within the authority. Therefore, real estate market will not only observe increase in compliance costs, but a rise in administrative burden as well. On the other hand, web listing of all approved real estate project developers and agents, although reduce some of the learning cost of the buyers, yet the major source of learning cost, which is related to the characteristics and prices of the authorities, will persist in the market. Similarly, the objective of the establishment of real estate appellate tribunal is to provide swift dispute resolutions. Our understanding is that the decisions of the tribunal would not be decisive in most of the cases due to the right of appeal. Therefore, one can expect the actual impact of tribunal on the reduction of litigation process time may be marginal. And beside administrative burden, the RERA will also create a financial burden as well in the real estate market. The Act identified that the federal government will provide only seed money for the establishment of the authority, and the authority will generate its own funding resources, and these own resources include fees levied by the authority, penalties imposed by authority and the tribunal. To understand how much financial burden the RERA will impose on the market, we contemplate the expected budgetary requirements of the RERA. The table above indicate the staff that would be required for the RERA. And to compute the expected financial burden of the staff, we utilized information about the grade-wise monetized incentive from the PIDE report
cash poor, perk rich. And the table below contains the calculations of annual salary bill. In sum, the minimum financial burden carries by the RERA is more than rupees 420 million, and this burden will ultimately fall on the shoulder of the buyers. And last consideration is related: does the real estate market really need a new authority? Currently, the functions assigned to the proposed RERA are fall under the jurisdiction of Capital Development Authority, except dispute resolution. Therefore, the establishment of RERA may also bring challenges over the division of functions among CDA and RERA, and the Act has disregarded this point as well. More surprisingly, the strategy adopted in the Act to achieve objectives has already been embedded in the bylaws of the CDA. For instance, the Act made a prior registration of the projects, developers, and agents with the RERA compulsory, while the Islamabad Real Estate Agents and Motor Vehicle Dealers Ordinance 1984 and ICT Zoning Regulations 1992 already deal with prior registration with CDA before starting the business or project. Besides the already existing rules and regulations within CDA, the necessary infrastructure and resources required for the implementation of these regulations are already working and developed by the CDA. There are at least 5 directorates within different wings of CDA performing the tasks that are assigned to proposed RERA. And in some, concludingly, by having a critical review of existing body of regulations and resources, one can very comfortably, easily, safely assert that establishment of RERA will not be a turning point for the market. Instead, it will add more regulatory burden on the market. If we evaluate the relevance of the mandate of the RERA based on the characteristics of well-functioning market, the mandate assigned to RERA appears to be incapable to address the inefficiencies of the real estate market. While the evaluation based on the relevance of objectives with the market requirements also indicate the realization of the objectives through this intervention will be a daunting task. Furthermore, the RERA cost heavily in the market in the form of regulatory burden. And based on experiences from other sectors, the promotion and regulation of real estate market through authority seems challenging. Our analysis indicate that the government should utilize the existing infrastructure and resources instead of focusing on developing a new authority. With this, we would love to listen to our panelists and their views. And thank you so much. जी शाहजहां साहब, आपने सुन लिया जो हम PID वाले कह रहे हैं। हमारा तो ख्याल है कि ये रियल एस्टेट अथॉरिटी जो थी इसका बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। एडिशनल रेगुलेटरी बर्डन बना दिया गया है। और दूसरा, आपने कोई वो क्या कहते हैं नई चीज़ नहीं की। एक एपेलेट ट्राइब्यूनल बना दिया है जो वैसे भी सिविल सर्विस का बना हुआ है, हर जगह बना हुआ है। एपेलेट ट्राइब्यूनल सिर्फ एक चीज़ होती है कि वहाँ जाके पहले जाएं, फिर हाई कोर्ट जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं। बात तो वहीं की वहीं है, बल्कि एक लेयर और एड ऑन हो गया। बाकी चीज़ें जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो तो एड्रेस ही नहीं हुए। तो क्वाइट फ्रेंकली, और दूसरी चीज़ जो फाइनल चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही कि इस्लामाबाद में अब लॉ पास होगी, फिर हर शहर में पास होगी, फिर हर अब क्या कहते हैं अलग-अलग लॉज पास होंगी, तो बर्डन बढ़ता ही जाएगा ना मुल्क का। जी शाहजहां साहब बताइए। Assalamu alaikum, Dr. Saab, and thank you so much for the invitation. Dr. Saab, it's true that it will increase the burden on this regulation on the real estate actors, whether the developers or the agents or the buyers. It was a private member bill introduced in the National Assembly, and sir, you know that the private member bill, in the private member bills we have in the preliminary stage we have least inputs and
stakeholder consultation on this. So when it was introduced in the National Assembly, then referred to the committee, and then the law was passed, and it was handed over to the ministry. There. Yes, sir. Bill जो था, this was sir, I didn't remember his name, लेकिन उन्होंने सर ये जो propose किया था सर, तो it was handed over to the ministry कि आपने इसको authority को notify करना है, and the act has been passed by the parliament. So then we started, when we go through the act, there was so many deficiencies and ambiguities in the act, and the same question was raised that we have vehicle in act, and CDA is there, we have a proper registration for real estate actors, with even with SCCP, and then the cooperative housing society, registrar of cooperative housing societies, and then CDA, but still we have established this authority having members from the non-planar registration. So sure, sir, there are many inefficiencies in this law, but we are now in consultation with the World Bank to frame the rules for this authority, so that we can address all the inefficiencies and the deficiencies and the other shortcomings in the rules, like this technology, or the absence of formal training for the real estate. Sir, you know that here people are least educated about the laws and how the societies started business in Pakistan, particularly in Islamabad. And as per to give a background of this, that as per Islamabad master plan, it was decided that the CDA will acquire whole of the Islamabad and develop 72 sectors in Islamabad. But unfortunately, with some financial constraints and maybe bureaucratic issues, that we couldn't acquire whole of Islamabad to develop all the sectors. Then we went for the societies, and then that this is acquired land, this is not acquired land, this is non-acquired land shall be developed by the societies, and then the societies they have to submit their layout plan, and then after the layout plan we will issue the NOC, and then the buyers and traders, they will deal with all these society plots, etc. This real estate business. Unfortunately, it created a lot of problems. Even problems like the societies established on a land with disputed lands, and even there was no land. Then the people coming to the standing committees of the Senate and National Assemblies, and to the registrar cooperative societies, and then to the courts, that we have been given plots and the files, but there's no plot on the land on that in that society, and the land is still disputed. And then comes this culture of societies on the name of the government departments, like sir, you have mentioned that National Assembly Society, Senate Society, and Interior Society, and so many societies, sir, Judicial Society. Again, sir, in order to then looking at these problems, this act was in the parliament, that the interest of the buyer and will be ensured through an efficient and transparent manner by regulating these mega projects and those real estate sector projects in Islamabad. So this law was passed in that sense, and of course, sir, there are shortcomings, and we are on it to remove all these to some extent. And then, unfortunately, it was not consulted with any our research institutes, nor any university to get their feedback. Nor it market survey was done, that what were the problems of the buyers and the developers and the real estate agents. So now when we will introduce it in the market, of course, they will ask, there will be so many confusion, and the people will be
astonished that we have to go through all these procedures in real estate regulatory authority as well before in CDA. So now again, as CDA couldn't perform very well since its establishment. So now the current government has decided to restrict CDA just to sector development and transfer all those other functions of the society, the CDA to the Islamabad local government. So soon, inshallah, we will be having a local government system in Islamabad by this March or April. So we'll limit CDA only to sector development, and most of the functions and the regulatory functions for the real estate sector will be transferred to the RERA and this RERA authority. And we'll see, sir, of course, there are deficiencies, and with the passage of time, we'll look into it, sir. Thank you very much, Ji. Let's hear the view of the CDA. Naeem Dar Saab, Director General Law, Capital Development Authority. बताइए ये क्या हो रहा है हमारे साथ के लॉस पास हो जाती है रात के अंधेरे में, कोई बात नहीं करता, ना CDA ना कुछ. नईम डार साहब. सर नईम डार साहब ने अभी सर ज्वाइन नहीं किया सर. नहीं ज्वाइन किया. अच्छा जी. मेरा ख्याल तनवीर साहब, आप तनवीर मुगल साहब, चेयरमैन रियल एस्टेट क्लब, मेरा ख्याल आप लोगों ने लॉ पास करवाई होगी. बताइए अगर आपको पता है कुछ, आप किसने लॉ पास करवाई है, कैसे करवाई है, क्यों करवाई है? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने माशाल्लाह इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया है और इस पे मुझे भी दावत दी है, और आपने जो जिस बात को इनिशिएट किया है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने इसको पास करवाया है. मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब ने बड़े अहम पॉइंट जो है वो ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, जिन पर दोबारा से कुछ बात हम एज अ रियल एस्टेट कम्युनिटी जिनकी आवाज हम बन के यहाँ बैठे हैं उनकी आवाज को यहाँ उठाया जा सकता है. कुछ चीजें तो उन्होंने कवर कर दी हैं. मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा कि मतलब ये रात के अंधेरे में कानून नए आ जाते हैं और वो कौन लोग लेके आते हैं, उनका मार्केट के साथ क्या ताल्लुक होता है, रियल एस्टेट वो कितना जानते हैं, किस तरह से वो हमारी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं. तो मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको बताना ये चाहता हूं कि जब ये रीरा का कानून हमारे मुल्क में लेके आने की बातें शुरू हुई और जाहिर है कि इसका कामयाब मॉडल हम दुबई में देख रहे हैं या दुनिया में बाकी जगहों पर भी रीरा जो है वो रियल एस्टेट के लोगों के लिए, इसके तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए एक बड़ा मस्बत किरदार अदा करने वाला ये एक अदारा है. अगर हम इस अदारे की अफादियत की बात करें तो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी के लिए, बिल्डर्स डेवलपर्स को कंट्रोल करने के लिए और बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और रियल्टर्स के हकूक व फराइज का तयन करने के लिए ये एक बड़ी अहम अथॉरिटी है जिसके क़याम को हम अप्रिशिएट करते हैं और काबिल तहसीन समझते हैं. लेकिन इसका जो तरीका कार अडॉप्ट किया गया, ये अगेन वही तरीका कार अडॉप्ट किया गया जो हमें मेस की तरफ लेके जाएगा, जो हमें फैसिलिटेट करने के बजाय एक रिफ्ट किसी कैफियत पैदा हो जाएगी कम्युनिटी के दरमियान और कानून के दरमियान. फिर कहा जाएगा कि पाकिस्तान में कानून सारे मौजूद है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होते. एग्जीक्यूट करने से पहले, मतलब कानून बनाने से पहले इनको चाहिए कि ये कम्युनिटी को एंगेज करें. हम एज रियल स्टेट कम्युनिटी, हमारे पास हमारी पूरे पाकिस्तान की एक बॉडी बन चुकी हुई है, फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान. अब उसमें पूरे पाकिस्तान की जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनके सदूर और जनरल सेक्रेटरी शामिल हैं और ये मिलके एक ऐसी बॉडी बनाई गई है जो पूरे पाकिस्तान में रियल्टर्स के मामलात को और इस बिजनेस के अंदर जो बाकी मामलात हैं उनको वो देख रहे हैं. एफबीआर के साथ जितने मामलात अभी हुए हैं, डीएनएफबीपी की रजिस्ट्रेशन, इन तमाम मामलात में मतलब वो लीड कर रहे हैं और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब रीरा के मामले में भी यही हुआ है कि जब रीरा को लिया गया तो हमारी जो लीडरशिप है उसको ऑन बोर्ड नहीं किया गया. अभी थोड़ी देर पहले शाहजहां साहब ने भी इसी तरह की बात की कि कम्युनिटी को एंगेज नहीं किया गया और कुछ ऐसे लोगों ने रात को बैठ के बस कानून बना दिया है. अब जब ये कानून एग्जीक्यूट होने की तरफ जाएगा
تو یقینی طور پر مطلب اس کو کمیونٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ ہمارے جو پریکٹیکل چیلنجز ہیں، ہم مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں، ان کا حل اس کے اندر پورے طریقے سے موجود نہیں ہے، بلکہ اس کو کاپی پیسٹ کر کے وہاں سے اٹھا کے یہاں لایا جا رہا ہے اور موٹی موٹی بات جو ہے نا اس میں کور کی جا رہی ہے، لیکن جو بنیادی ہمارے چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے، اتھارٹی کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جس طریقے سے بنایا گیا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے لیڈرشپ کو، ریئل اسٹیٹ کی لیڈرشپ کو اس میں انگیج کیا جانا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، اس میں ہم نے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ آفیشیل ایک ہمارا تھنک ٹینک بنا، فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان نے نیا پاکستان کی ہاؤسنگ سوسائٹی، نیا پاکستان کی مطلب آپ ویب پیج پہ جائیں، اس میں تھنک ٹینک ہے ایک بنا ہوا، وہ تھنک ٹینک ہماری ریکمنڈیشن پہ، ہماری لیڈرشپ کی ریکمنڈیشن پہ بنا ہوا ہے۔ اب جب ریرا کا قیام کا معاملہ چلا تو میں جو پوائنٹ بنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ریرا جن لوگوں نے بنایا ہے وہ ہم نہیں ہیں، ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، ہمیں اس قانون کو بنانے کے مراحل میں شامل نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ پھر کوئی ایسی چیز بن جائے گی جو ایگزیکیوٹ ایبل نہیں ہوگی، پھر مطلب چیزیں آگے پازیٹیو مثبت انداز میں نہیں چلتی ہیں۔ تو جو تھنک ٹینک ہم لوگوں نے ایک متعارف کروایا، اور یہ آفیشیل تھنک ٹینک ہے جو نیا پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں تو اس میں آپ کو ملے گا۔ ہم لوگوں نے، ہمارے تھنک ٹینک نے 35 صفحات پر سفارشات مرتب کی تھیں جو ہم چاہتے تھے کہ اس قانون کا حصہ بنے، لیکن سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کون لوگ ان چیزوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو کمیونٹی کی طرف سے جو کنسرنز آ رہے ہوتے ہیں، کمیونٹی کی طرف سے جو چیزیں ایسی آ رہی ہوتی ہیں جن کو سن کر، آبزرو کر کے ان چیلنجز اور ان مسائل کا احاطہ کرنا، ان کو سمجھنا اور اس کو پھر قانون کا حصہ بنانا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کون لوگ ہیں جو ان چیزوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، جو ان چیزوں کو پس پش ڈالتے ہیں اور اپنی کچھ 2-4 لوگ بیٹھ کے یہ قانون سازی کر دیتے ہیں۔ اور قانون سازی اگر ایسی ہو بھی جائے تو ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بھی چیلنج کی طرف اشارہ کیا ہے، میں نے پہلا پوائنٹ بنا دیا ہے کہ ہم نے تھنک ٹینک کے طور پر سفارشات بھی پیش کی ہیں اور ان سفارشات کو ان پر غور نہیں کیا گیا، ہماری لیڈرشپ کو انگیج نہیں کیا گیا، جبکہ ہم لوگ فرنٹ فٹ پہ آ کے ہر چیز کے اندر پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں، ہر چیز میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اپنی کمیونٹی کے مسائل کو جانتے ہیں، اپنی مارکیٹ کو ہم جانتے ہیں، اور ہم اس قانون سازی کے اندر اپنی انپٹس دینا چاہتے ہیں، جبکہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں جو گاڈ نوز کہ مطلب کیوں کمیونٹی کو انگیج کرنے میں ایسی کیا برائی ہے، پوری دنیا کے اندر قانون بنتے ہیں، پوری دنیا کے اندر کمیونٹیز کو انگیج کیا جاتا ہے اور اسی طرح قانون بنائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں کاپی پیسٹ کا کوئی ایسا کلچر ہے کہ مطلب بس کاپی پیسٹ کر دینا ہے۔ اور یہ اگین ڈاکٹر صاحب کو پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک اور اتھارٹی کا برڈن ہمارے اوپر بن جائے گا۔ ہمارے ملک کے اندر بڑا عجیب میس ہے، ہمارے ملک میں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کرنی ہو تو اس وقت تقریباً کو 22 قسم کے این او سی چاہیے ہوتے ہیں۔ 22 قسم کے جو این او سیز ہیں یہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ ایک کے پاس جائے وہ دوسرے کے پاس بھیجتا ہے، دوسرے کے پاس جائے وہ تیسرے کے پاس بھیجتا ہے، اور پہلی بنیادی چیز ہمارا لینڈ کا جو سسٹم ہے وہ اتنا کمپلیکس اور اتنا مشکل ہے کہ وہ کوئی 1808 کا کوئی لٹھا بنا ہوا ہے، انگریز نے آ کے کوئی زمین کی پیمائش کی تھی، پتہ نہیں وہ اس وقت کیسے انہوں نے پیمائش کی تھی، اور وہ پیمائشیں آج بھی چل رہی ہیں، اور اس کے اندر عجیب میسی چیزیں ہیں۔ ہم اگر زمین ایز اے ڈیولپر بائی کر بھی لیں تو اس کو ہم اداروں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق صاف ہی نہیں ہو سکتی، کوئی میکینزم ہی نہیں ہے کہ وہ زمین صاف کی جائے، تو یہ ایک اور ریگولیٹری افیئر ریگولیٹری کھڑی کر دی جائے گی۔ اس میں بھی رجسٹریشن مست ہوگا، پہلے 22 این او سی تھے اب 23 این او سی ہو جائیں گے، اور ان کی آپس میں کسی قسم کی کوارڈینیشن اداروں کی نہیں ہوتی ہے۔ آپ ایک ادارے کے پاس جاتے ہیں وہ اپنی کو بات کرتا ہے، دوسرے ادارے کے پاس جائیں وہ اپنی کو بات کرتا ہے، تیسرے ادارے کے پاس جائیں وہ اپنی کو بات کر رہا ہوتا ہے، ان کے آپس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے نا کوارڈینیشن نہیں ہوتی ہے۔ ریگولیٹری افیئر دنیا میں یہ جو مطلب ریرا ہے، ریرا دنیا میں سرو کرنے والا ادارہ ہے۔ دبئی ہمارے سامنے ایک بیسٹ ایگزامپل ہے، دبئی کے اندر ریرا بہت زبردست کام کر رہا ہے، دبئی کے بعد انڈیا نے اس کو اپنے ملک میں ایگزیکیوٹ کیا ہے اور وہاں پر بھی اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم ریرا کے بارے میں
ہے تو مثبت, یہ بہت ساری چیزیں بہتر لے کے آئے گا, لیکن اگر ایگزیکیوٹ ہوگا تو. میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی اس میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی اشارہ کر دیا کہ ہمارے ملک میں 18ویں ترمیم کے ذریعے پورے سارے صوبوں کو علیحدہ علیحدہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو اپنی اسمبلی میں اس طریقے سے پاس کر کے لے کے آئیں گے. تو یہ اتنی جو ایفرٹ ریرا کی ہو رہی ہے, یہ سارا مطلب اگین یہ صرف ایک شہر کے لیے ہو رہی ہے. تو ہم چونکہ ریئلٹرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پورے پاکستان میں ہماری ریئلٹر کمیونٹی ہے جن کے حقوق و فرائض کا کہیں کسی قانون کے اندر بھی کوئی اس طرح کا میکانزم نہیں بنا ہوا کہ جو لوگ مارکیٹ میں لین دین کر رہے ہوتے ہیں, جب ان کے لین دین کا کوئی معاملہ بن جائے, ڈسپیوٹ بن جائے, کسی نے کوئی چیز بائی کی ہے اور وہ اپنے متعلقہ ایجنٹ کو کمیشن نہیں دے رہا, کوئی پارٹی بھی اس طرح کا کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہو گیا ہے, تو دیر از نو باڈی, کوئی حقوق اور فرائض ڈیفائن نہیں ہے پاکستان کے کسی اور ادارے میں. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں ہم رجسٹر ہوتے ہیں, وہاں وہ صرف پروفیشنل ٹیکس لیتے ہیں. ایف بی آر میں ہم رجسٹر ہوتے ہیں, ایف بی آر صرف اپنے کام کر رہا ہے. تو ریگولیٹری ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی ضرورت ہمیں ہے, ہم ایز اے کمیونٹی اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں حقوق اور فرائض واضح ہو جائیں اور یہ قانون کی شکل اختیار کریں تاکہ ہمارے حقوق ہمیں ملے اور ہمارے فرائض واضح ہو جائیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. سیم اپلائز فار ڈیولپر, سیم اپلائز فار بلڈرز, کہ بالکل ہی مادر پدر آزاد قسم کی مارکیٹ ہے جس کی وجہ سے جتنے ان ایتھیکل جو پریکٹسز ہیں وہ چل رہی ہیں اور بہت زیادہ چل رہی ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی اگر افیکٹو طریقے سے کام کر پائی تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اس میں ایک فائدہ ہم ایز اے کمیونٹی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مطلب نان پروفیشنل لوگ, نان رجسٹرڈ لوگ, نان لائسنسڈ لوگ, مطلب ریئل اسٹیٹ کا کام ایسا کام ہے کہ یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے یہ انتہائی اہم, اس میں کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. دوسری طرف آپ اس کو دیکھیں تو کوئی بندہ بھی, کسی بندے کو جب اطلاع ملتی ہے کہ یار ریئل اسٹیٹ کا کام بڑا اچھا چل رہا ہے, تو وہ اپنی کار شو روم کو بند کرتا ہے اور ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کر دیتا ہے, اپنے کپڑے کی دکان کو اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کرتا ہے اور خود آ کے مارکیٹ میں دفتر بنا کے کام شروع کر دیتا ہے. 6 مہینے 8 مہینے کام کرتا ہے, اچھا کرتا ہے, برا کرتا ہے, وہ کر کے نکل جاتا ہے. تو ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی میں ہم جو ایک مثبت چیز دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لائسنسنگ اتھارٹی ہونی چاہیے, اور اس میں جو ٹریننگ پروگرامز اور مطلب جس طرح پوری دنیا کے اندر ہے کہ کوئی بھی ریئلٹر. بہت اچھی بات کی آپ نے مغل صاحب. دیکھیے پوائنٹ یہ ہے, ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی میں چیک کر چکا ہوں, نہ امریکہ میں ہے نہ برطانیہ میں ہے, مڈل ایسٹ میں ہے. تو ہم ایک بندر بن گئے, ہم انسان نہیں, ہم بندر ہیں. کوئی کرتا ہے ہم پیچھے کاپی کرنے کو بھاگتے ہیں. وہ دبئی کیا چیز ہے بھائی, دبئی تو ایک مطلب لاہور کے برابر نہیں ہے. دبئی کے پیچھے ہم اسلام آباد سے بھی چھوٹا ہے دبئی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. ہم پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں, مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. دوسری چیز جو آپ نے کہی, کوئی ریئل اسٹیٹ میں آ جائے, مجھے پتہ ہے ریگولیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم نے کیا تھا کچھ اور لوگوں سے بھی, ریگولیشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہماری بزنس میں اور پروفٹ بڑھاؤ, ہمیں بڑھاؤ. بھائی ہم کنزیومر کہاں گئے؟ میں ریئل اسٹیٹ لینے جاتا ہوں مغل صاحب, میں آپ کو حالات بتاؤں گا ہمارے کیا ہیں. ریئل اسٹیٹ اس ملک میں ایک دھاندلی, ایک دھندا ہے, ایک تماشا ہے, ایک چور بازاری کا نظام ہے. اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. ریگولیٹری اتھارٹی سے نہیں ٹھیک ہوگا. آپ لوگ بھی اپنے گریبان میں منہ جھانک کے دیکھیں. آپ کہتے ہیں آپ نے تھنک ٹینک بنایا, ہمیں دکھائیں کہاں ہے تھنک ٹینک. تھنک ٹینک تو ملک کا PIDE ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب وہ تھنک ٹینک نہیں ہے, وہ صرف ایک لابی گروپ ہے. لابی گروپس اس ملک میں بہت بنے ہوئے ہیں. لابی گروپ سے ہم نکلیں اور مارکیٹ بنائیں تاکہ آپ لوگ سب پیسے بنائیں. ہم چاہتے ہیں آپ پیسے بنائیں, اور پیسے صحیح طریقے سے بنائیں, کنزیومر کی کھال اتار کے مت بنائیں. جی تیمور صاحب بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ ریئل اسٹیٹ والے اپنے گریبان میں منہ جھانک کے بھی دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے. اس ملک میں تو آپ کو پتا ہے پھر حالات یہ ہیں کہ ساری طرف وہ کر رہے ہیں. تیمور صاحب بول لیں پھر بات کرتے ہیں. تیمور صاحب بولیے. السلام علیکم سر. فرسٹ آف آل آئی وڈ ریئلی لائک تھینک یو کہ آپ نے یہ بڑا ایک برننگ ٹاپک ہے. وہ فیض کا ایک شعر ہے میں جس سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات اس کو بہت ناگوار گزری ہے. وی ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ جو ایک ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنی ہے یا جو ان کا ایکٹ بنا ہے, تو یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کے چیلنجز ہیں یا ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے جو پرابلم جن کو ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اینڈ یوزر یا کنزیومر فیس کرتا ہے, شاید ان مسائل کا کوئی نہ کوئی اس کے اندر حل ہوگا.
बट अनफॉर्चुनेटली उसको एड्रेस करने के बजाय ऑल टुगेदर वो ऑलरेडी, मैं किसी हद तक वो तनवीर मुगल साहब की बात से एग्री भी करूंगा कि जो ऑलरेडी तकरीबन कोई 20-22 एनओसीज पहले थे, अब एक नया एनओसीज और एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी खड़ी कर देना एंड इसको एक ऐसे इस तरीके से खड़ी कर देना कि बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट सेटअप बना देना। पहले ही एक प्रोजेक्ट करने में जहाँ 3-4 साल लगते हैं, अब प्रोजेक्ट करने में 5-6 साल लगेंगे एंड उसके नतीजे में जो एंड यूजर है, उसके जो कंज्यूमर के राइट्स हैं, वो कैसे प्रोटेक्ट होंगे। मैंने तो इसको एक्ट को देखा जब मुझे पता चला कि जी इस तरीके से वेबिनार हो रहा है, तो आई कुडंट फाइंड एनीथिंग सर। इस वक्त आई कंप्लीटली एग्री विद यू। पाकिस्तान में सर अभी ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक माशाल्लाह से नारा दिया था कि हमने 5 मिलियन घर बनाने हैं। तो वो 5 मिलियन घर बनाने हैं, बनाने के बाद जब डाटा इकट्ठा करना शुरू हुए तो पिछले 3-4 साल में पता चला कि अभी भी तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन खाली प्लॉट पड़े हैं जिनके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, जिनके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। अब 2.5 से 3 मिलियन प्लॉट जो खाली पड़े हैं, जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, जो पिछले 10, 15, 20, 25, 30 साल से खाली हैं, और वो एक स्पेकुलेशन की पूरी मार्केट उनके ऊपर चलती है, उसके होते हुए मजीद सप्लाई उन्हीं प्लॉट्स की क्रिएट कर देने का अल्टीमेट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली एज अ कौम एक सर साइकी भी है कि हम साइलोज में रहते हैं, आइसोलेशन में रह के काम करना पसंद करते हैं और कभी भी हम चीज़ों को इंटीग्रेट नहीं करते। तो अनफॉर्चुनेटली ये भी जो मैंने जब कल रात से जब मुझे पता चला कि वेबिनार में से बात होनी है, तो थोड़ी सी जो रिसर्च की, तो अनफॉर्चुनेटली जो कंज्यूमर राइट्स हैं सर, उनका इसमें कोई जिक्र नहीं है, सिवाय इसके कि आपने ऑलरेडी सीडीए, या आप कल लाहौर में जाएंगे तो एलडीए, या कराची में जाएंगे तो केडीए, वो सारे काम जो एलडीए, सीडीए, केडीए कर रहा है, उन काम को करने के लिए एक और इदारा आपने बना दिया है, और उस इदारे को भी आपने ये कह दिया कि जी जो चीजें वो चेक करते हैं वो चीजें आपने भी करनी है। एंड जो असल प्रॉब्लम है जिस वजह से तमाम के तमाम तर ये मसाइल पैदा होते हैं, उस प्रॉब्लम, उस रूट कॉज को ना तो इसमें एड्रेस किया गया और ना कोई लगता है कि इसमें एड्रेस किया जाएगा। जो सबसे बड़ा, मैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं जिस पर स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा कि जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, वो जो आपकी सारी की सारी पूरी प्रॉपर्टी की मार्केट को चला रहे हैं, उनकी जो लाइसेंसिंग है, उस लाइसेंसिंग के मेरिट्स क्या हैं, उसके डीमेरिट्स क्या हैं, उसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। सर आपने अगर एक तरबूज भी लेना हो मार्केट में, तो आप 3-4 तरबूज चेक करते हैं कि यार कौन से वाले का वजन ज्यादा है, कौन से वाले में पानी ज्यादा है, एंड जो बंदा बेच रहा है उसने मुझे पिछली दफा जो तरबूज दिया था वो ठीक था कि नहीं था। अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है कि जिसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, एंड कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ग्रेडिंग नहीं है, कोई स्कोरिंग नहीं है कि जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड कर सकें कि यार जिस बंदे के पास हम जा रहे हैं, जो हमें एडवाइस कर रहा है, जो हमें गाइड कर रहा है, उसका कोई हमारे पास एक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो कि जिसकी बेस पे हम ये देख सकें कि क्या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वर्थ इट है भी कि नहीं। ये आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद इस रीरा के अंदर वो जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं या रियल एस्टेट एडवाइजर हैं, उनकी लाइसेंसिंग को और उनकी लिस्टिंग को या उनकी सर्टिफिकेशन पे कोई ना कोई काम होगा। अनफॉर्चुनेटली वो तो इसमें नहीं हुआ। अलबत्ता वही काम जो ऑलरेडी सीडीए, आरडीए या बाकी इदारे ऑलरेडी पहले कर रहे थे, उन्हें करने के लिए एक नया इदारा कायम कर दिया गया है। अब इसके नतीजे में मसाइल कैसे हल होंगे, वी डोंट नो। अभी भी तकरीबन पाकिस्तान में सर कोई 8,000 से 9,000 प्राइवेट स्कीमें कुछ मुख्तलिफ इदारों की और कुछ प्राइवेट डेवलपर्स की चल रही हैं। उनमें से 5 से 6,000 हाउसिंग स्कीमें हैं जिनकी कोई मंजूरी है ही नहीं। अब ऐसी स्कीमें जिनकी मंजूरी नहीं है, उसके अंदर जो एंड यूजर बेचारा कोई ना कोई किसी ना किसी जो उसे फैंटिसाइज करके आप उसकी इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड कौन करेगा, और उसके नतीजे में वो जो एंड प्रोडक्ट वहां बननी है, वो एंड प्रोडक्ट कैसे बनेगी, ना तो इस पूरे फसाने में उसका जिक्र है, ना इससे पहले फसाने में उसका जिक्र था। तो ये एक ऑलरेडी जिस तरह वो हमारा एक ऐसा कौम मिजाज है कि हमने चीज़ों को जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेड टेपिज्म करना है। एक सरकारी इदारे में एक कमरे के अंदर बैठ के कुछ लोगों ने ये डॉक्यूमेंट बना दिया, उनको किसी ने बताया कि जी जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जिस तरीके से जी दुबई में ऐसा है तो फलां ऐसा है तो फलां ऐसा है, उन्होंने कॉपी पेस्ट करके एक चीज़ हमारे सामने रख दी है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे किसी भी प्रॉब्लम के साथ। हमारा सर सबसे बड़ा मसला ये है कि या तो हमारे यहाँ रेगुलेशन कुछ ऐसे इदारों में, कुछ ऐसी फील्ड में जहाँ पे रेगुलेशन होने चाहिए वहाँ रेगुलेशन है ही नहीं, और जहाँ रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेशंस हमारी मौजूद हैं। कोई एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई सेंट्रलाइज रिपोजिटरी नहीं है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप एक इदारे के पास जाएंगे, वो आपको 6 महीने साल दलील करेगा, और 6 महीने साल दलील करने के बाद ये नहीं कहेगा कि आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, वो आपको नए इदारे के पास भेज देगा। तैमूर साहब, अमेरिका, बरतानिया, बाकी मुल्कों ने
रियल एस्टेट एजेंट्स ने खुद मल्टीपल लिस्टिंग सर्विस बना ली है, ठीक है जी। आप लोग कहते हैं आपने थिंक टैंक बना लिया, आप लोगों ने एसोसिएशन बना ली है। हमारे मुल्क का निज़ाम यही है अनफॉर्चुनेटली कि एसोसिएशन बनाते हैं हम लॉबिंग के लिए, एसोसिएशन अपनी मार्केट बढ़ाने के लिए नहीं बनाते। आपकी मार्केट मैं कहता हूँ तिगनी चुगनी हो जाए अगर आप मल्टीपल लिस्टिंग सर्विस बना दें। सिंपल मल्टीपल लिस्टिंग सर्विस क्या है? जो प्रॉपर्टी मैं फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में रेंट करना चाहता हूँ, मुझे कोई चीज़ पता नहीं चलती कहाँ रेंट हो रही है। भाई खुदा के वास्ते आप सारे रियल एस्टेट एजेंट्स मिल के दिखा देंगे क्या रेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा। बाकी दुनिया में ये काम होता है। नंबर 2, मुझे बताइए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रियल एस्टेट में है वो तो हाउसिंग सोसाइटी है। हाउसिंग सोसाइटी मैं आपसे बार बार पूछता हूँ किस मुल्क में होती है? ये एक हमारा फरसूदा बेवकूफ़ों वाला निज़ाम है। क्यों जी? ये बताइए शाहजहां साहब, हाउसिंग सोसाइटी कहाँ होती है? या आप माशाल्लाह हुकूमत से हैं, क्यों नहीं हाउसिंग सोसाइटी क्यों नहीं पहले बंद करते? ये जो निज़ाम है, जो हमने इस पे एनालिसिस किया, हमने इस पे लिखा है, एक हाउसिंग अथॉरिटी सोसाइटी जो है 20-25 साल लगते हैं बनते बनते, और उसमें बीच में फाइलें बिकती हैं। फाइलें क्या होती हैं? फाइलें बिकती हैं जो अब लैंड नहीं होता उसके बारे में फाइलें बिकती हैं। या तो लैंड हो, ऑप्शन दुनिया जहान में होती है, ऑप्शन होती है जबकि नीचे सिक्योरिटी हो। जहां सिक्योरिटी है ही नहीं, आप ऑप्शन बिकने देते हैं, फाइलें बिकने देते हैं। वो कहते हैं जी हमने हाउसिंग सोसाइटी बना ली है 5,000 की, हमारे पास जमीन सिर्फ 500 है, हमें 5,000 के पैसे दे दे तो हम 5,000 की फाइलें बेच देते हैं। ये फ्रॉड हो रहा है कौम से, इसको तो किसी ने नहीं रोका, ठीक है। नंबर 2, हाउसिंग सोसाइटी अगर जजों की हाउसिंग कॉलोनी बनती है तो मैं अगर उसको खरीद लूँ प्लॉट 20 साल 30 साल इंतजार कर रहा हूँ, किसको सू करूँ? जजों को तो सू नहीं कर सकता, तो किसको सू करूंगा? जजों के पास जाऊंगा, वो जज कहेंगे यार हमारी कॉलोनी हम कैसे लें? तो ये क्या निजाम बनाया हुआ है? सुई गैस हाउसिंग अथॉरिटी में सुई गैस को सू करूं? नहीं, सुई गैस तो एग्जिस्ट कहती, मैं नहीं मानती, मेरा नहीं है ये, तो किसका है? ये चक्कर क्या है, क्या हो रहा है ये? जी शाहजहां साहब बताइए। सर यू आर राइट सर, इसमें प्रॉब्लम ये है ना सर कि ये जो एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इदारे हैं उनके रोल को अगर सही स्टडी किया जाए बाय द रियल स्टेट एक्टर्स, वो उसमें से देख ले कि देयर इज नो स्पेसिफिक रेगुलेशन टू रेगुलेट दीज सोसाइटीज। लाइक सर अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं सर, एक सोसाइटी शाहजहां साहब मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि रेगुलेट करें, मैं तो मुझे कह रहा हूँ ये जानवर होना ही नहीं चाहिए। ये जो जानवर है हाउसिंग सोसाइटी, ये जब सर, किसी मुल्क में नहीं है, किसी मुल्क में मुझे सर, बता दें वो इसको खत्म क्यों नहीं करते? व्हाई डज इट एग्जिस्ट? राइट डॉक्टर साहब, इसमें कहीं पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। यहाँ पे ये दिस प्रैक्टिस इज एक्टिव ऑन इन पाकिस्तान के। यहाँ पे 3-4 बंदे मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके और रजिस्ट्रेशन आर्टिकल ऑफ रजिस्ट्रेशन बना के वो 5 कनाल जमीन ले ले और 15 कनाल जमीन के चार्ज द मनी फ्रॉम द कंज्यूमर, और कंज्यूमर बेचारा फिर उसको पता ही नहीं है कि देयर इज ए कंज्यूमर कोर्ट वेयर माय राइट्स और ड्यूटीज क्या है, मैंने क्या करना है। तो वो जो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसमें अगर अगर तनवीर साहब अगर ये देख ले चैप्टर 4 जो है हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज जो है, उसमें हमने कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इट्स ट्रू कि जो रियल स्टेट का एक तो हाउसिंग सोसाइटी का तो कल्चर ही दुनिया में नहीं है, इट ओनली एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, कि यहाँ पे एक लॉबिंग करके वो फिर आ जाते हैं और पैसे बटोर के जस्ट दे फ्लाई अवे। इवन जो स्टाम्प पेपर पे एक दूसरे के जो फाइल ट्रेडिंग होती है, दे डोंट नो कि स्टाम्प पेपर एक्ट में कि स्टाम्प पेपर किस तरह आपने लिखना है, क्या नहीं लिखना है। एक बंद कमरे में 3-4 लोग बैठ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर फाइलें बेच के, और कंज्यूमर बेचारा फिर कभी इस दर पे कभी उस दर पे, एंड देन दे कम टू द गवर्नमेंट और स्टैंडिंग कमेटीज और इसमें रिट पेटिशन और ये चीजें फाइल होती है, एंड वेस्टिंग द टाइम ऑफ द गवर्नमेंट, और इस चीजों में उनको उलझाया जाता है। और रियल स्टेट एक्टर जो है दे जस्ट एंजॉय वहाँ पे जो प्रॉफिट्स है फ्रॉम द लैंड। और वो इस तरह सोसाइटीज है कि 1970-60s में लॉन्च हुए, अभी तक वो स्टैब्लिश नहीं हुआ, एंड द पीपल मनी आर इन्वेस्टेड देयर, और वो बेचारे कहाँ जाए। एंड व्हेन इट कम्स टू एनओसीज को आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसको एक गलत वो क्यों लिया जा रहा है। सपोज अगर मेरा एक इदारा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और मेरा एक शर्त है कि आप पीए से एक एनओसी ले ले, तो इट्स देयर वहाँ पे जो परमिशन है कि वेदर इट इज अलाउड टू यहाँ पे एस्टेब्लिश सोसाइटी और नॉट और वट एवर। तो वो मल्टीपल जो इदारे हैं वो टू द एक्सटेंट ऑफ देयर मैंडेट है। इफ इट इज फॉर प्रोफेशनल टैक्स तो व्हीकल ऑर्डिनेंस, इफ इट्स फॉर ए बीआर इनकम टैक्स और उसमें तो दैट इज
revenue division FBR. If it is for environmental protection, तो there is EPA. तो वो NOCs को या उसको गलत लिया जा रहा है. Coming to CDA को एक थोड़ा समझना चाहिए. CDA is for developed sectors, or only the planning wing of CDA regulate कहें या just to oversee the planning layout plan and the planning design of areas other than acquired sector, like Islamabad Capital Territory के जो areas CDA ने acquire नहीं किए. तो it is for a planning के proper planning हो उसमें roads हो. अब आप E11 sector जो this not a CDA sector, आप उसकी हालत देख लें. कोई 10 mm बारिश ज़्यादा क्या हुई कि वो सारे roads block हो गए. And today even we are having a hearing in the वफाकी मुत्तसिब के 11 में कोई बंदा आके मेन हाईवे पे वो स्पीड ब्रेकर बना दिया. रीत ये है, हम चाहते ये हैं कि बजाय प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक और प्रॉब्लम खड़ा कर दे कि वो काम नहीं कर रहा, सीडीए काम नहीं कर रहा, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव द ग्रेड रीडिंग अफसर क्या मलिक रियाज को रेगुलेट करेगा, क्या जजेस को रेगुलेट करेगा, और वो बैठा हुआ है. बल्कि मैं कहता हूँ रेगुलेशन की जरूरत ही कोई नहीं, पूरी दुनिया में रेगुलेशन नहीं होती, हमें चाहिए प्रॉपर क्लियर लॉज. जी तनवीर साहब बताइए, ये हाउसिंग सोसाइटी क्या जानवर है, मुझे बताइए, ये हाउसिंग सोसाइटी को हमने क्यों रखी हुई है, इसमें कितना फ्रॉड होता है, कोई इसका हिसाब है? आपका थिंक टैंक है तो बताइए, कोई हिसाब इसका लगाता है? सर बिल्कुल, ये आप की बात बड़ी जेन्युइन है कि हाउसिंग सोसाइटीज ये जानवर पाकिस्तान में ही खुला हुआ है, लेकिन इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज स्टेट वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही है. जब इससे पहले एक दफा जमीनों के मामलात के ऊपर, मसाइल के ऊपर बात हुई थी, तो मलिक रियाज साहब ने बड़ा क्लियर स्टांस दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें जमीनें प्रोवाइड कर दे, उन जमीनों की मालिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रहे, हमारे साथ जेवी करे, हम बनाएंगे, आबाद करेंगे, बेचेंगे, उसको चलाएंगे. मतलब पूरी दुनिया में गवर्नमेंट के और प्राइवेट सेक्टर के इस तरह की कोलैबोरेशंस होती हैं, उन कोलैबोरेशंस में चीजें बन रही होती हैं. हमारे इधर चूंकि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं कर रही होती, शाह साहब ने अदारों की कुछ थोड़ी बयान तो कर दी कि ठीक है, अदारे अपने अपने कुछ ना कुछ किसी न किसी मकसद पे कायम होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने का सबब बनते हैं. हमारे मुल्क में क्यों लोग एनओसी से भागते हैं? क्योंकि जो लोग परसू कर रहे होते हैं वो लोग भी जब अंदर से रिपोर्टिंग लाते हैं, 2-2 साल 3-3 साल गुजर जाते हैं, उनको एनओसी नहीं मिलते, और उसकी बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात होते हैं, जिसमें करप्शन एक बहुत बड़ी वजह है कि जो सरकार में अंदर पावर पोजीशंस के ऊपर लोग बैठे हुए लोग होते हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट को मतलब लीगल तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय वो अपनी ज़ात के लिए काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट वाला काम को पूरा तरीके से कर देंगे तो उनकी जेब में पैसे कोई नहीं डालेगा. लेकिन जब वो काम नहीं करते हैं, किसी भी तरह उसको रोकते हैं और दूसरी तरफ लेके जाते हैं डेवलपर्स को, बिल्डर्स को, तो फिर जाहिर है कि उधर से उनका ज़ाती मुफाद तो बहुत अच्छा फुलफिल होता है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट जो है ना वो उसको लीगल कवर नहीं मिलता, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों के साथ ज्यादती हो जाती है. और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो ये प्रैक्टिस है, जाहिर है कि इसमें बैड प्रैक्टिसेस हैं सर. हम खुद इन चीजों का किला कमा चाहते हैं, हम ऐसे तमाम लोगों को बड़ी सख्ती से निपटते हैं, और हमारी जो फेडरेशन है वो किसी सूरत भी इन लोगों को अप्रिशिएट नहीं करती, बल्कि हम हर तरह से उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं. रिसेंटली कराची में 1-2 मामलात हुए जिसमें बिल्डर्स की बैड इंटेंशन को जो है वो देखा गया, और उनको बहुत सख्ती से हम लोगों ने फेडरेशन लेवल पर वो चीज हुई थी कि लोगों की ये प्रैक्टिस बनी हुई है कि 3-4 लोगों ने मिल के कोई जगह खरीदी, उसको बेच दिया, बेचने के बाद लोगों ने उनको पैसा दे दिया, जब 70-80% पैसा लोगों से ले लिया, चीज बना ली, तो उन्होंने जनाब आपस में एक ड्रामा करके कोर्ट केस बना लिया. कोर्ट केस करके उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिए, साइट बंद हो गई, लोग परेशान हो रहे हैं. ठीक है, किसी ने साल सब्र किया, 2 साल सब्र किया, लोगों बेचारों के सब्र के पैमाने जब टूट जाते हैं और वो परेशान होने लगते हैं कि पता नहीं हमारा पैसा भी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो फिर मजबूर होकर उस बिल्डर को कहते हैं यार हमारे पैसे वापस दे दो.
उन लोगों को वो पैसे जो उन्होंने 3-3, 4-4 साल पहले लिए होते हैं वो पैसे वापस कर देते हैं और बिल्डिंग को नए रेटों पे बाद में बेच दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है अवाम के साथ, कंज्यूमर के साथ जो अपार्टमेंट लेना चाहता है, प्लॉट लेना चाहता है। ये तहफ़्फ़ुज़ देना गवर्नमेंट का काम है और हम खुद चाहते हैं कि ऐसा कानून, ऐसा सिस्टम बने जिससे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, ताकि ये जो फ्रॉडिये किस्म के लोग मार्केट में होते हैं, लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, लोगों के पैसे के साथ ज्यादती करते हैं, ये ज्यादती किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। हम रियल एस्टेट के वो प्रोफेशनल लोग हैं जो हम अपने मुल्क का, अपने अपने इस बिजनेस का इमेज जो है वो मस्बत करना चाहते हैं। जिसलिए मैं, डॉक्टर साहब आपने ये भी कहा था कि आप बताएं थिंक टैंक कहाँ है। नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी की जो नया पाकिस्तान की जो वेबसाइट है, आप प्लीज उस पर जाएं। हमारा एक ऑफिशियल थिंक टैंक है, ये हमने कोई लॉबिंग नहीं की है, हमारे पूरे पाकिस्तान की फेडरेशन एक बन चुकी हुई है, उसकी रिकमेंडेशन पे सरकार के साथ मुशावरत के साथ हमने एक थिंक टैंक बनाया था 12 लोगों का, जिसमें बड़े जिम्मेदार लोग हैं। ये इट इज नॉट सच काइंड ऑफ लॉबिंग, इट इज नॉट सच काइंड ऑफ ग्रुप कि जो अपनी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि हम पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी को, जो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो लोग मस्बत कानूनी फ्रेमवर्क में रह के काम करने वाले लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और 35 सफात की सिफारिशात मुरतब की हैं। डॉक्टर साहब ये बहुत मेहनत वाला काम था, 3-4 महीने दिन रात हम लोगों ने काम किया है। 35 सफात पे सिफारिशात हमने मुरतब की और इन लोगों को दी कि आप इसको रेरा का हिस्सा बनाएं। ये वो मामलात हैं जो एड्रेस हो जाए तो हमारी रेगुलेशन बॉडी जो है वो मार्केट को बड़े स्टेबल तरीके से चला पाएगी। थैंक यू, बड़ी अच्छी बात की आपने, मुझे लिंक बता दिया, मैं अभी लिंक देख रहा हूँ। देखें जी, ये थिंक टैंक जो है आपका, इसका चेयरमैन है शौकत तरीन, ठीक है जी। इसका जो नंबर 2 है ज़ैगम रिजवी, वो भी हुकूमत का बंदा है। नंबर 3 आबाद, नंबर 4 आबाद, नंबर 5 आरिफ हबीब, नंबर 6 AKD, नंबर 7 कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन, नंबर 5 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोई, नंबर 6 PMRC एक और लॉबी, चेयरमैन काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट टाउन प्लानिंग, बिस्मिल्लाह ग्रुप, फिर उसके बाद पता नहीं क्या। मुझे बताइए, इसमें एक बंदा नहीं थिंक टैंक वाला, सारे बंदे हैं जो कि बिजनेस खुद कर रहे हैं। तो ये थिंक टैंक होता है? ये तो थिंक टैंक नहीं होता, ये तो लॉबिंग ग्रुप होता है। देखिए हम इस मुल्क में बहुत कंफ्यूज करते हैं टर्म्स, बिकॉज हमें पता कुछ नहीं। थिंक टैंक होता है PID, जो बिल्कुल अलग है, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो सारे वही लोग बैठे हुए हैं जिनका कारोबार है ये। तो कारोबारी लोग थिंक टैंक नहीं बन सकते मुगल साहब। कारोबारी लोग लॉबी करते हैं, कारोबारी लोग चाहे कुछ भी कह ले, मैं नहीं कहता चोर है, मैं नहीं कहता कुछ भी, पर लॉबी करते हैं। मैं भी अगर आऊंगा किसी ऐसे ग्रुप में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैं लॉबीइस्ट हूँ, आई एम नॉट अ थिंकर। मैं थिंकर तभी हो सकता हूँ अगर मेरा हाथ उसमें ना हो, मेरा इंटरेस्ट ना हो उसमें। तो ये बात आपकी गलत है कि थिंक टैंक है, ये लॉबिंग ग्रुप है। बिल्कुल ठीक है, लॉबिंग ग्रुप जरूर बनाए। आपके लॉबिंग ग्रुप कितने, आबाद भी है, कंस्ट्रक्टर्स ग्रुप भी है, आप भी हैं, 50,000 तो लॉबिंग ग्रुप है। कंज्यूमर का बेचारे का कोई ग्रुप नहीं होता और सारे लॉबिंग ग्रुप सरकार के साथ बैठे होते हैं। देखिए ये मुल्क का बड़ा ही अफसोसनाक बात है। मैं जब प्लानिंग में था तो मैं यही देखता था और मैं रोज कहता था कि जी ये हमारे पास सारे मोटे लोग आ जाते हैं, बेचारे गरीब लोग कहाँ हैं? गरीब लोग जो मारे जा रहे हैं। आपने जो बयान किया कराची वाला, अलीम खान ने यही लाहौर में किया था, अलीम खान ने यही लाहौर में किया था पाकवी हाउसिंग सोसाइटी से, और फिर DHA को बेच दिया। हाउसिंग सोसाइटी ओलंपियन भी पड़ी है, सही खगे ने ओलंपियन भी यहाँ पड़ी हुई है, 40 साल से खाली पड़ी हुई है। इस्लामाबाद में मुर्गा सिटी एक PMLN का MNA खा गया, ठीक है। ये हजारों ऐसी चीजें हैं, बट ये जेनेसिस लाया करता है हमारी लॉ हाउसिंग सोसाइटी की। एक ऐसी लॉ है जो चल ही नहीं सकती। आपने उन बंदों को दे दी है ये चीज हाउसिंग सोसाइटी, जो कि उनको आपने खुला छुट्टी दे दी है कि 5 कनाल जमीन लेके 1000 कनाल बेच दें, फाइलें बेच के। ये निज़ाम एक बड़ा गंदा निज़ाम है, ये होना चाहिए। पहली चीज, जो भी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहा है, इस निज़ाम को बंद करे। हाउसिंग सोसाइटी अव्वल तो कोई चीज ही नहीं है। जो हाउसिंग सोसाइटी लगाए, अभी भी कॉर्पोरेट लॉ में यह है, अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर बनता हूं तो मैं भी बीच में मुलव्वस हो जाता हूं, मेरे ऊपर भी केस हो सकता है। जो हाउसिंग सोसाइटी के बंदे हैं उनके ऊपर फिर केस होना चाहिए ना, कि अगर अलीम खान ने कुछ किया है या फलाने ने कुछ किया तो फिर मैं केस करूं तो उसके खिलाफ करूं। हाउसिंग सोसाइटी तो एक नेबुलस एनिमल है, उसके खिलाफ केस करूं। नंबर 2, जितनी आपके पास जमीन है उतनी बेच सकते हैं, उससे ऊपर नहीं आप बेच सकते।
بنا کے بیچے, بنانے سے پہلے مت بیچے. اور فائلیں کیسے بیچ سکتے ہیں آپ جس کی جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی چیز؟ تو یہ چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں جو حکومت کو پتہ ہی نہیں. میرا تو خیال حکومت کو آئیڈیا ہی کوئی نہیں, پتہ ہی کوئی نہیں. آپ لوگوں کو پتہ, آپ بتاتے نہیں ہیں. نمبر 3 مجھے بتائے کہ میں ایف بی آر ریٹ, ڈی سی ریٹ, یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں, یہ کس نے بنائی ہیں؟ ہمارے ملک کا نظام, دبئی کی طرف تو ہم دیکھ لیتے ہیں ریگولیٹری, دبئی میں ایف بی آر ریٹ ہے, ڈی سی ریٹ ہے, دبئی میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, دبئی میں فائلیں بکتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم کاپی تو وہاں سے کر لیتے ہیں, اپنی طرف نہیں دیکھتے. دبئی میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں جو کہ مجھے پراپرٹی بیچ کے, ٹھیک ہے, میرے پاس آتے ہیں, نہیں سوری, میرے پاس اگر پراپرٹی ہو, یہ روز ہوتا ہے, مجھے کہتے ہیں سر آپ کروڑ کی دے دیں, 4 ہفتے دے دیں, 6 ہفتے دے دیں, میں آپ کو بیچ دوں گا, میں آپ کو پیسے دے دوں گا. اس کے بعد جا کے ایک اور بندہ ڈھونڈ لیتے ہیں, 1 کروڑ 20 کی بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فراڈ ہو رہے ہیں یہ سارے آپ لوگ خود ہی کر رہے ہیں اور حکومت آپ کے ساتھ ہے. تیمور صاحب تو اب بھاگ گئے, میرا خیال ان کو پتہ چلا ٹف کوسچننگ ہے, وہ نکل گئے. تو ٹھیک ہے جی, شاہ جہان صاحب آپ بتائیے گا, حکومت کا کوئی رول ہے یا حکومت صرف بل پاس کر کے چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے, بل پاس ہو گیا. آپ کیا رپورٹ کرتے ہیں؟ آپ نے پرائم منسٹر کو بتایا شاہ جہان صاحب کہ یہ فائلیں کتنی غلط چیز ہے؟ آپ نے بتایا ہاؤسنگ سوسائٹی ایک جانور صرف اس ملک میں ایگزسٹ کرتا ہے اور کہیں نہیں ایگزسٹ کرتا؟ آپ نے بتایا فائلنگ یہیں ایگزسٹ کرتی ہے, ڈی سی ریٹ, ایف بی آر صرف یہیں ہے. یہ ہم نے خود نظام بنایا ہوا ہے. جی شاہ جہان صاحب. سر اس میں ہلو جی بولیے. سر اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ فائل ٹریڈنگ ہوتی ہے, اٹس اے مینجمنٹ کمیٹی رول جو سوسائٹی کی ہے کہ ٹو ایڈریس دا ایشوز آف دا الاٹی اور اس میں چیزیں جو بھی ہے. لیکن دا پرابلم از جب وین اٹ کمز ٹو دا نوٹس آف دا گورنمنٹ, اس میں سر آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی ملک ریاض کی. ہماری گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے دیٹ از اپ ٹو دا ایکسٹینٹ آف کہ ہم اس کے خلاف پرچہ کرواتے ہیں, پرچہ کرا کے وہ اگینسٹ کورٹ کیسز پیشیاں, اور وہ سر آپ کو پتہ ہے سر کہ وہاں سے پھر ان کو ضمانت مل جاتی ہے اینڈ دے کمز آؤٹ ود مچ پرائڈ کے ضمانت لے لیے سر. تو گورنمنٹ کی ہے نا ہماری سر اس میں رپورٹنگ تو ہے سچ, جو پرائم منسٹر آفس کو اس پہ سچ رپورٹنگ تو نہیں ہے, لیکن جو ان کی ریگولیشن جو ہے اس کو جو ریگولیٹ ہم کرتے ہیں دیٹ از ٹو دا ایکسٹینٹ آف یا تو ہم ان کو شوکاز نوٹس دیتے یا ایل او پی وغیرہ کینسل کرواتے ہیں, یا ان کی جو مینجمنٹ کمیٹی سے وہ مایوس ہو کہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو یہی ہم اس کے ایف آئی اے یا اس میں انکوائری کرا کے اس کے خلاف پرچہ کرواتے ہیں. فراڈ کیس ہے تو ایف آئی اے کو بھجوا دیتے ہیں, اگر کرپشن کیس ہے تو نیب کو بھجوا دیتے ہیں. یہ اس میں سے زیادہ ریسنٹلی سر ہم نے وہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا تھا ابھی غوری ٹاؤن کا, تو مطلب میگا مطلب کرپشن اور اس میں لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں تھی. تو ہم نے یہی کیا ٹو دا ایکسٹینٹ آف کے ریفر دا کیس ٹو دا نیب اور put the management committee on exit control list. تو ادر دین دیٹ گورنمنٹ تو مطلب یہی کر سکتی ہے, اس کے زیادہ وہ مطلب وی ہیو نو سر اس میں انٹرونشن. اور سر اس میں ایک اور چیز آپ نے سب پوچھا تھا سر, یہ سینیٹر محسن عزیز صاحب نے اس کو بل کو پلیس کیا تھا سر اس میں ایز اے پرائیویٹ ممبر بل. نہیں, وہاں تو لکھا ہوا ہے ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ارباب صاحب. سر سینٹ میں, سر یہ سینٹ میں ہوا تھا سر, سینیٹر محسن عزیز کے اس پہ ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے جی, دونوں کو ہم انشاءاللہ we'll get hold of both of them and talk to them. جی نعیم صاحب یہ بتائیے, جو ابھی بات ہوئی ہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی آپ کیوں چلنے دیتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے کہ یہ غلط چیز ہے؟ فائلوں کا نظام جہاں کے ایک زمین ہے نہیں اور فائلیں بک رہی ہیں, یہ نظام سراسر غلط ہے بلکہ چوری ہے. اور ڈی سی ریٹ اور ایف بی آر ریٹ ایک بالکل فرسودہ نظام ہے. یہ آپ پرائم منسٹر کو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ لوگ جو آفیشلز ہیں کیوں نہیں کیبنٹ میں سمری جاتی کہ دنیا میں کہیں اور ججز کالونی نہیں ہے, دنیا میں کہیں اور اسٹیٹ سیمنٹ کالونی نہیں ہے, دنیا میں کہیں اور ایسی کالونیز نہیں ہے, یہ کیوں بن رہی ہیں؟ اور پھیلاؤ ملک کا بڑھی جا رہا ہے. 20-30 سال لگتے ہیں کالونی بننے میں, اور 20-30 سال لگتے ہیں لوگوں کے پیسے ضائع ہونے میں, اور کئی فیل ہو جاتی ہیں. کیوں نعیم صاحب کوئی بتائیے, سی ڈی کی کوئی رسپانسبلٹی ہے اس میں کہ نہیں؟ جی نعیم صاحب, نعیم صاحب از ناٹ دیر. منصور صاحب آپ کہہ رہے تھے نعیم صاحب آگے. سر نعیم صاحب ہیں تو صحیح. جی نعیم صاحب پلیز انمیوٹ یور سیلف. سر نعیم صاحب سر کائنڈلی مائک اپنا انمیوٹ کر لیں سر. نعیم صاحب انمیوٹ نہیں کر سک رہے لگ رہا ہے.
Naeem Dar Sahab, sir, kindly अपना mic unmute कर ले, sir. Naeem Dar Sahab, please unmute your mic. चलें जी, I guess nobody wants to answer the question कि ये why do we have, you know, the worst real estate market in the world, and why do we copy only the regulation and not worry about the market? ये हमारे thinkers को भी सोचना चाहिए कि क्या है जी. Anybody wants to ask a question, please raise your hands. Otherwise, back to you, Shah, Jehan Sahab, Tanveer Sahab, बताइए what would you, yeah, Ahmed, Waqar Sahab, do you want to say anything? जी मेहताब हैदर साहब, why don't you go ahead? हमारे नामवर जर्नलिस्ट हैं, बताइए मेहताब साहब. सर मैं ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी सारी बातें वही कर रहे हैं, मसाइल जो है वो बता रहे हैं, लेकिन ये जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल पास हुआ है, क्या इसमें कोई सोल्यूशन नहीं हुआ? हमें तो पता ही नहीं चला कि ये बिल कब पास हुआ है जी. आपके आने से पहले यही बात हो चुकी है, रात के अंधेरे में बिल पास हुआ है. ये सेनेटर मोहसिन अजीज और अरबाब साहब कोई हैं, उन्होंने ये बिल पेश किया, जल्दी जल्दी में पास हो गया, किसी को पता भी नहीं चला. ये बिल बजाय प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के प्रॉब्लम में और मुसीबतें खड़ी कर रहा है, रेगुलेशन बढ़ा रहा है. इसमें कॉस्ट भी बढ़ जाएगा क्योंकि सरकारी अफसर लगेंगे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी. हाउसिंग सोसाइटी जो एक जानवर है, जो हमारे मुल्क में सिर्फ है और कहीं नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता. जो फाइलें बिकती हैं सिर्फ हमारे मुल्क में बिकती हैं. फाइलें वो बिकती हैं जो ज़मीन होती भी नहीं उस पर बिक जाती हैं. ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है, बाकी मुल्कों में दिस वुड बी डिक्लेयर्ड फ्रॉड. और दूसरी चीज़ ये भी नहीं होता कि हमारे यहाँ FPR DC रेट, ये भी किसी मुल्क में नहीं है, हमारे मुल्क में है. इन चीज़ों पे मुझे समझ नहीं आती ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं समरी देते प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, कि भाई ये करें. हम समरी बना देते हैं, भाई शाहजहां साहब हम बना देंगे, आप कैबिनेट में ले जाए. हम तो ले जा नहीं सकते, हम जा सकते ज़रूर ले जाते हैं. ये जो निज़ाम है इसको ख़त्म करें भाई खुदा के वास्ते. और रियल एस्टेट के जो है, ये जो बैठे हुए हैं अपने कंस्ट्रक्टर्स और आबाद और ये और वो, ये सारे लॉबी करते हैं, अपने काम करवाते हैं. कंज्यूमर बेचारा रह जाता है. कंज्यूमर को बेचारे को सारा वक्त मुसीबतें भरनी पड़ती हैं. और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का हमारे वकार साहब ने पूरा रिव्यू किया, आप देख लीजिएगा उससे. ठीक है जी. जी शायद साहब बताइए. अस्सलाम वालेकुम जी. बड़ी मज़ेदार प्रेजेंटेशन थी. सबसे पहले तो डॉक्टर वकार का शुक्रिया कि उन्होंने टेक अप किया. सिंस आई हैव वर्कड ऑन दिस बिट, तो लेट मी शेयर समथिंग. ये कल ही की बात है और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा. डॉक्टर साहब ने NOC की बात की, डॉक्टर नदीम ने. सर मैं ये कल की बात बता रहा हूँ. मुझे किसी ने कॉल की एंड ही सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स. एक DC साहब है, वो जनवरी, एक फॉरेन फर्म है, वो आई हुई है, उन्होंने गैस एंड ऑयल की एक्सप्लोरेशन की है, उन्होंने ऑयल निकाला है, स्टोर किया हुआ है, इजाजत उनको नहीं मिल रही सेल करने की. जनवरी 2021 से उन्होंने NOC के लिए अप्लाई किया है. एक DC साहब है, वो NOC नहीं दे रहे और वो सिफारिशें करवा के थक गए हैं बेचारे. तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर क्या आप इस इशू को उठा सकते हैं, हमें NOC मिल जाए. एक DC NOC नहीं दे रहा सर उनको. ठीक है सर, ये 1 साल से ज्यादा हो गया. तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो अथॉरिटीज बनाए जा रहे हैं, हाउ इज इट, अभी मेहताब हैदर साहब ने भी बात की कि हाउ इज इट गोइंग टू सॉल्व द अंडरलाइंग इशू. ये NOC स्थान है, यहाँ पे हर एक चीज के लिए NOC चाहिए. पहले जरा ग्राउंड तो किसी चीज के लिए बना देना. आप किस तरह किसी मसले के हल के लिए आप ग्राउंड नहीं बना सकते. अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं कि इन्होंने ये जो अथॉरिटी बना दी, मुझे ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट का हर इदारा रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट जो है अपने सरकारी अफसरों के लिए जमीन खरीद के 1894 के एक्ट के तहत करोड़ों की जमीन खरीदती है, लेकिन फिर लाखों में वो प्लॉट बिकते हैं और एक एक अफसर को 2-2, 3-3, 4-4 प्लॉट बिकते हैं. मुझे बताएं कि वो इसको कैसे रेगुलेट करेंगे, इसका कोई हल है? वो इसी तरह हल हो सकता है अगर आप हाउसिंग सोसाइटी को बंद करें, हाउसिंग सोसाइटी और गवर्नमेंट को डेवलपमेंट से निकाल दे. जी अरसलान शेख साहब. Hello, assalamu alaikum. Hi, my name is Aslan Sheikh. I've worked for major real estate developers as a lawyer in the UAE and GCC, and I've looked at and I've been consulted in terms of real estate regulation, including how RERA was set up 15 years ago. And the issue that I have is that we're talking about a lot of negativity, and I agree there are some. I would say the law provided is extremely lacking in a large number of areas. But in terms of the need for regulation,
You asked, why isn't there a regulatory authority in the US and UK? Because they don't need one, because they have been around for 300-400 years. They have a system of law, system of regulations, which has evolved. What Pakistan, I believe, needs to do is to follow those countries which are in a similar position that we are. We are effectively in a Wild West. We are in a situation which is perhaps even worse than what Dubai was 15-20 years ago. And I know a lot of people have a negative perception of Dubai in many ways, but I'll tell you this, in terms of regulation, what they have done in the last 10-15, since 2005, has been, and us working for a government developer, we were very skeptical at first, but what they have done in that period is I think groundbreaking. Dubai is now a jurisdiction where you as a consumer, as a purchaser, as an investor, once you put your money into a project, that money is safe in an escrow account. The project itself is regulated. It is, nobody can sell anything until they have the actual plot of land, until the approvals have been given and everything like this. So I think that we need to follow and utilize those practices which are most suitable for us. I agree there are many aspects about Dubai which I would not follow here. I think as a government developer or any developer, you're required, by way of example, you are required to show your level of construction before you can get the next tranche of investment. Even as a government developer, that was very difficult for us to prove. I think that would give rise to a lot of corruption in terms of who you're getting the approval from. So I agree, we can't have a cut and paste, but there is a requirement for regulation. And I think India has also seen that. The India legislation, which I've gone through in detail, applies to the whole of India. And I think that's one of the things which is lacking in this current law. So to summarize, I 100% agree that there is a requirement for regulation and a regulatory authority. It should, like the Indian RERA Act, be applicable throughout the country. And there's no reason why that isn't possible. Our constitution is very similar to India, so that is not an issue. And I don't disagree with you on the need for regulation, but you as a lawyer and as a practicing lawyer in the construction or the real estate industry, let me ask you a question. I've relocated. Yes. Do housing societies exist anywhere in the world? Is housing society a legal animal? Is it an animal that is compliant with anything? Can I sue a housing society? Can I get recompense from a housing society? Secondly, this issue of files, when you don't even have land, you are selling files, claims on land that you don't own. Is that legal? My point is regulation comes after the government cleans its own act. The government is allowing these fraudulent practices to exist. Do FBR DC rates exist anywhere? Should they exist? I think first of all, we have to address the market conceptual issues. Do we need housing societies? Is there such a thing as a housing society? What does a housing society mean? Yeah. I think by a housing society, you could call that in many different names. You could consider a master community, like Palm Jumeirah in Dubai, or I was in the States. My cousins live in a housing community, which is Liberty in Virginia. There's hundreds of different societies and retirement societies and various different types. So I think the housing society that we have in Pakistan. You know about the Pakistani Housing Society of Salon Sahab? Yes, I know yes. the US very well. I appreciate that. Do they have a society like a judicial housing colony in the US? When you say Liberty, or when you say, for example, Ashburn Village, yes, it is a community, but it was developed by a developer. And now the community lives in it and runs it as a community association. That's fine. But the developer was not able to sell. I remember visiting Ashburn Village. And I remember visiting all these housing societies, whatever. They're not housing societies, they're developments. They're called developments. I remember visiting them. I almost bought in one of them. In fact, I did buy in one of them. The developer signs a contract with you, sells you a house at a certain point in time. He can't stretch it for 25 years.
He can't sell you a house that does not exist. He has to show you a house that exists. It may take him 6 months to complete it, but that's it. Can't stretch to 25 years. So ye bhi to hamare hai na, and he is the what do you call it, the sole or whatever the company, whatever he is the sole owner of that, and if he defaults, he will be sued and he will pay. Yahan to ye na nebulous animal hai. You can't sue them. No, I'm not justifying for 1 second the current state of affairs in Pakistan and housing societies in particular. I agree with you. Housing society is supposed to be a body corporate, which is owned by all of the investors or owners in that community. And it is subject to strict bylaws, which should be, in the case of Australia, which is a very highly regulated jurisdiction, which is mandated by the law and regulations. And it can be sued and be sued, which is an important factor. But that is not to say that we cannot get these entities to evolve into one. Now, how do you do that? You do that by the power of the law. You do that by good, effective regulation. What we have here is not that. I mean, if you're asking me if we're right to do a RERA Act, what are you looking to do? Well, number one is that you need investor confidence. You need to increase investor confidence. You need to protect the consumer. I have seen the bizarre situation where we have subcontracted escrow and the requirement to open escrow accounts for investors to the State Bank of Pakistan. That for me is bizarre. This should be one of the first things that any RERA is set up for. Secondly, we are talking about owners associations. The current law does not provide a pathway to create an owners association. If that were the case, then perhaps we could be able to solve some of the issues regarding these housing societies to effectively convert them from what they are, which is basically a body with very little accountability, zero transparency when it comes to service fees and everything like that. So what I'm saying is that what this law should have been a very small, law which basically talked about setting up an authority. After that, there should have been consultations with people in the industry regarding and then the regulations itself should not all have been clubbed into one. The biggest issue that I have with this law is that it talks about jointly owned property and community management. And there's one clause regarding, I think it was Taimoor mentioned that there's nothing about brokers. Well, there is something about brokers, but it's in clause 45, but it doesn't say how how that would be enforced or how that comes about. So what you needed this law, and then you needed a raft of different regulations. Aapko jointly owned property ka chahiye tha, aapko investor confidence, escrows, project registration, fixing what is, I think, the biggest issue that I have, and I can also say this as a lawyer, is that the title registration system. Pakistan, I think just in Karachi alone, there are about 21 different entities which register title. Why you cannot evolve and create a single one is another matter, which is why when I tried to register a REIT in the Dubai International Financial Center, the issue was always whether it was BA, DHA, that ye title kahan se, ye kisne registered kiya? Hum is title ko hum mante nahi, because ye allotee kya cheez hai, ye owner kya hai. So basically हमने ये नहीं सोचा that ज़्यादा detail में that actually what is the current problem, what is the current situation, and how do we resolve that? बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की तनवीर साहब, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। टाइटल की जो बात है, टाइटल मुझे समझ ही नहीं आता। वो DHA कहता है मैं टाइटल रखूंगा, सुई गैस कहती है मैं टाइटल रखूंगा, वो फलाना कॉलोनी कहती है मैं टाइटल रखूंगा। हमने स्टेट विद इन अ स्टेट बना दिया है। जी शाहजहां साहब, तनवीर साहब बताइए। ट्रू सर, टाइटल उसमें जो जितने भी सोसाइटीज यहाँ बने हुए दे रिटेन द टाइटल्स, और वो जो आगे प्लॉट देते हैं या अपार्टमेंट जो भी ब्लॉक यूनिट देते हैं, इट इज लीज्ड आउट।
So they have just इसमें इस तरह है सर कि they have copied जो गवर्नमेंट के रूल्स है कि वहाँ पे सर जो हमारे फर्द में लिखा होता है नाज़िम ओनर आला एंड ओनर अदना, that नाज़िम ओनर आला is the government and adna is the person जिसकी आपकी प्रॉपर्टी है. तो they just look at that फर्द और उसको कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे भी वही सेम they have cut copy paste in their rules जो society के rules हैं कि I am the owner, I will keep the title, the society is on my name, the unit you have purchased is just through sale deed is leased out to you on such conditions. So वो उसमें से ये उस पे the thing is के वो है. लेकिन how to keep the to register the title in this RERA Act. When it comes to the rules, like Arsalan Saab said that there is protection for the allottees, but how to implement it, he was referring to section 45. So Arsalan Saab, it is when an act is passed from the parliament, when it comes to the rules, then we specify all the procedural and all other requirement that how to implement this act और उसके क्या होंगे तरीका कार और इसमें से तो वो सारी चीजें आ जाती है. तो सेम फॉर द टाइटल एंड इट्स ए डिबेटेबल थिंग. वहाँ पे जब ये रीरा बनेगी तो उसकी बोर्ड में इट इज ए डिबेटेबल के वी विल सी के उसमें हम किस तरह इसको एंटर कर ले टाइटल, whether it will be on the name of the society, DHA, whether DHA can own या retain a title or not. तो वो उसमें से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, फर्दर उसमें से कर लेते हैं. तनवीर साहब, आपके क्या ख्याल है लास्ट ख्यालात? ये हमें रियल एस्टेट मार्केट तो मिलनी कभी नहीं मेरा ख्याल. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अरसलान शेख साहब ने माशाल्लाह जो इनपुट्स दिए हैं वो बहुत जबरदस्त हैं. मैंने भी दुबई को जो बेस बनाकर बात की थी कि रीरा बेसिकली हम कॉपी दुबई से कर रहे हैं. उसकी वजह डॉक्टर साहब ये नहीं है कि हम दुबई को कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन दुबई रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए पूरी दुनिया के लिए इंस्पायरेशन बन चुका हुआ है. इंस्पायरेशन बन चुका है, हमारे लिए भी है. जितने पिछले 25-30 सालों में जो डेवलपमेंट दुबई ने करके दिखाई है वो अपनी मिसाल आप है. मतलब इस जैसी मिसाल आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलती है. इस मामले में जाहिर है हमें शेख साहब को हम सलूट भी करते हैं और उनके बनाए हुए कवानीन, उनके बनाए हुए सिस्टम्स जो है वो इसलिए हम उनकी तरफ देख रहे हैं और शायद इसीलिए वहीं से रीरा उठा के हमारी गवर्नमेंट भी ले आई है. इसलिए हम एज अ कम्युनिटी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को अप्रिशिएट करते हैं और हम इसकी आमद को किसी बेहतरी की तरफ लेके जाने की सोच रखते हैं. सिर्फ जो कॉम्प्लिकेशन इसमें है, डॉक्टर साहब ने भी कुछ चीजें पॉइंट आउट कर दी हैं कि अगर एंड यूजर एंड कस्टमर एंड इन्वेस्टर, इस्लाम साहब ने भी कहा कि रीरा का बेसिक काम बेसिकली है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल हो. अब रीरा ऐसा कानून हमें दे कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज इन्वेस्टमेंट करें वो रीरा में रजिस्टर्ड लोगों के साथ जब पैसा इन्वेस्ट करे तो कल उनका कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी मामला हो तो रीरा उसको एड्रेस करे और फौरी तौर पे रिजॉल्व करे उस इशू को. अब हमारी जो अदालतें हैं, अदालतों के अंदर 70% केसेस जो है वो रियल एस्टेट के रिलेटेड है. तो और इतने कॉम्प्लिकेटेड ये चीजें हैं कि जिन पे कोई फैसले ही नहीं हो पाते हैं. जिस तरह डॉक्टर साहब आप मतलब हाउसिंग सोसाइटी को बड़ा क्रिटिकली ले रहे हैं, ठीक है, इन सम एक्सटेंड आप ठीक कर रहे हैं कि मतलब क्योंकि यही वो एरिया है जहां पे कंज्यूमर्स के साथ, एंड यूजर के पैसे के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है पाकिस्तान के अंदर. आज तक 70 साल की तारीख में जितना बड़ा नुकसान इन लोगों ने पाकिस्तान के लोगों को और ओवरसीज पैसे को भी, ओवरसीज ने भी जितना पैसा पाकिस्तान में भेजा है, ऐसी अनरजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियों में पैसा आया है, ऐसे लोगों के पास पैसा आया है जिन लोगों ने डिलीवरी नहीं दी है. ये हम एज रियल एस्टेट कम्युनिटी लीडरशिप मतलब हम इस चीज को कंडेम करते हैं कि ऐसे तमाम रास्ते रोके जाने चाहिए जहां पे लोगों को नुकसान होता है, जहां पे इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है और ये नुकसान पूरी मार्केट को शेक करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को शेक करता है. और जो लोग सही काम करने वाले लोग हैं उनके लिए चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं. वो काम करके भी बहुत सारी ऐसी प्रेशर्स के नीचे रहते हैं क्योंकि उनके इर्द गिर्द ऐसे फ्रॉड और ऐसे केसेस होते हैं जिसकी वजह से लोगों का एतमाद डैमेज होता है, इन्वेस्टर्स का एतमाद डैमेज होता है. तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को
दुबई की तरफ देखने से मकसद, डॉक्टर साहब आपने एक और बात कही कि लाहौर जितना नहीं है दुबई, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब हम आबादी में, हम वुसत में उससे बहुत बड़े हैं, लेकिन हम बिजनेस में बहुत पीछे हैं उससे, चाहे वो रियल एस्टेट का बिजनेस हो, चाहे वो कोई और बिजनेस हो, वहां से हम इंस्पायरेशन ले रहे हैं, हम कोई उनकी मतलब इस तरह नहीं है कि इस तरह को कॉपी कैट के चक्कर में, लेकिन पूरे लाहौर शहर का जो बिजनेस है, उसका जो वॉल्यूम है, वो इक्वल टू दुबई के 4 टावर्स में जितना बिजनेस होता है, सिर्फ 4 टावर्स में जितना बिजनेस होता है, दैट इज इक्वल टू लाहौर होल सिटी। साहब मैं आपसे एग्री करता हूं, पर उसकी वजह क्या है? जो हम बंदर है ना, बंदर सिर्फ दूसरे की चाल कॉपी करता है। बंदर ये नहीं देखता कि उसकी टांग टूटी हुई है या क्या है। हमारी टांग टूटी हुई है भाई, हमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी हुई है। कोऑपरेटिव स्कैंडल हुआ था, मुगल साहब आप मेरे ख्याल पैदा भी नहीं हुए थे, कोऑपरेटिव स्कैंडल हुआ था 1970-80 में, मुझे भूल भी गया, ठीक है। और उसमें ये जो अपने चौधरीज हैं, ये शिजात वगैरह, ये सब उसमें थे। उसको खुद बोध कर दिया गया कोऑपरेटिव स्कैंडल को, पर कोऑपरेटिव स्कैंडल उस वक्त से प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तक कोऑपरेटिव है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों एग्जिस्ट करती है, फाइल क्यों एग्जिस्ट करती है, ये दोनों चीजें फ्रॉड है, लीगली दे आर अ फ्रॉड। अरसलान साहब से बात करेंगे इस पे, मैं तो बड़े लॉयर से बात कर चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आती। मैं एज एन इकोनॉमिस्ट देखता हूँ, एज एन इकोनॉमिस्ट कंपनी की जो बेसिक प्रेमिस होती है वो ये कि somebody is liable और उसके एसेट्स लायबल। अगर एसेट्स ही लायबल, या चले अगर आप लीगल फिक्शन भी रखनी है कि वो दूर है, तो किसी ना किसी तरीके से यू हैव टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन द मार्केट। कुछ ना कुछ तो पैसे लूज करे बंदा। अगर जो ओनर है वो कुछ लूज ही नहीं कर रहा, सिर्फ कंज्यूमर्स लूज कर रहे हैं, दैट्स फ्रॉड। नंबर 2, फाइलें जो बिक रही हैं, एक एसेट एग्जिस्ट नहीं करता, उसको आप बेच रहे हैं, दैट्स फ्रॉड। नंबर 3, जमीन आपके पास है नहीं, आप चीजें बेच रहे हैं, दैट्स फ्रॉड। ये फ्रॉड है, ये रियल एस्टेट नहीं, ये फ्रॉड है। नंबर 4, इन्फॉर्मेशन आप दे नहीं रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं भाई तू खरीद ले, फिर आप आगे जाके किसी और को दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही। ये सारी चीजें फ्रॉड की हैं जो रियल एस्टेट मार्केट में मुझे नजर आती है। पहली चीजें ये सॉल्व करने वाली। फिर फाइनेंसिंग पे आज अरसलान साहब ने बात की, उसकी एस्क्रो की, रीट की वगैरह, वो बाद में बातें आएंगी। पहले हमें टाइटल तो क्लियर हो, पहले हमें क्लैरिटी तो है कि मिल क्या रहा है। मुझे तो पता ही नहीं, मैं फाइल लेकर बैठा हुआ हूँ। मैंने फाइल ली हुई है 2000, अरसलान साहब मैंने फाइल ली हुई है 1980 से, पड़ी हुई है अभी तक, कट गई, ठीक है। मुर्गा सिटी बताइए, तैमूर साहब एग्जिस्ट कर रही है, मुगल साहब मुर्गा सिटी एग्जिस्ट करती है? क्या हुआ मुर्गा सिटी में? मतलब ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं। तो दुबई में फ्रॉड तो नहीं ना होता? दुबई में जब फ्रॉड होता है तो फिर असलम साहब, शेख साहब क्या करते हैं, वो जो शेख है वो दुबई में फ्रॉड होता है तो वो आपका गला भी काट देते हैं। यहाँ तो फ्रॉड होता है, फ्रॉड होके आप पार्लियामेंट में आ जाते हैं, आप सेनेटर बन जाते हैं। दुबई में 20 साल पहले बहुत फ्रॉड आपका दर्द सच्चा है। मैं खुद था, आई वर्क फॉर गवर्नमेंट मास्टर डेवलपर। तो एक हमारा जो रिक्वायरमेंट था वाज टू पुलिस दोज डेवलपर्स जिसने हमसे प्रॉपर्टी खरीदी थी, प्लॉट खरीदी थी। तो हमने इतनी दफा देखा था, तो उसने किसी और को बेच के, किसी और को बेच के, किसी और को बेच के, basically investors were buying from people who did not own the land, who had no right to the land. We would usually keep the title until the building was completed, लेकिन बहुत दफा ये होता था that वो पैसे लेके कोई भाग जाता था. That was the whole point for RERA. That's why RERA came. And RERA evolved not just through Dubai का भी consultation process था. Dubai picked a lot of the laws जो Dubai में है are based on Australian law. And बहुत सारे consultants आए थे उस वक्त and everything. Some of it good, some of it bad. Does the Sheikh allow files? Not anymore. Well, before you would have to make a complaint directly to him. Now you don't have to. Now it goes through RERA. All I'm Now asking you is, go and make a all I'm asking complaint. is, can files be floated in Dubai? It is illegal. It is illegal, That's huh? because That's all I'm that's asking. because they have that's because they have law and regulation. Can Law I and sell regulation. property कानून that बनाए उन्होंने. Can I sell property that I don't own? I mean, it depends in what context. You know, कभी-कभी ये होता है that कोई management company बना दी, which is selling the property on behalf of the plot owner, because a lot of times the plot owner doesn't want to develop it himself. Arslan Sahab, let's stay on the subject. The plot exists, something exists. Can I sell a plot? For example, I floated a housing society. Okay? I don't own the land. And can I sell that plot without owning the land? Well, first of all,
Until that housing society is registered with RERA, you will not be able to sell anything, because before you come to the market, there are a lot of requirements similar to what is in this law actually, in terms of the registration of the developer, his business plan, his approval of his marketing materials, that he has ownership of the land or he's purchasing it from a proper master developer. So the answer is, of course, no, that is not the case in the way where you can sell things which you don't own, but you have to go through a process. All I would say, Arslan Saab, is that I do not, as an economist, I know lawyers can talk from both sides of the mouth. As an economist, I think liability has to be clearly assigned. You remember, I agree. I'm sure you've heard of 100%. Ronald Coase, one of the biggest names in law and economics. Liability has to be clearly assigned. If liability is not assigned, you don't have a market. Then you have a fraud. Liability has to be assigned. In this country, liability is not assigned. In this country, there is no liability signed. The corporate society owner has no liability. He can make the society, not make the society run away. Secondly, files do not have an underlying asset. Derivatives exist in the world when you have an underlying asset. Files do not have an underlying asset. In my world, the economist world, when you don't have an asset and you make a derivative, that's called fraud. In the economist world, if you don't have a person with liability, you don't have a business, you have a fraud. And what's going on in Pakistan is a total fraud, which needs to be checked. And government is supporting the fraud by means of putting out new prices, kabhi FPI rate, kabhi DC rate, only to support the fraud that's going on. The point is the underlying law has to be checked. The underlying law has no liability assigned to anybody. People float these societies, go to the registrar cooperatives and say, मैंने ये paperwork कर लिया है, मेरे पास है, बस ठीक है, आ जाएगा 5,000 कनाल, बेच तो 5,000 कनाल, कल बेच देता है, उसके बाद बेचारे लोग कंज्यूमर्स इंतजार करते रहते 10 साल. क्या मुगल साहब ये सही नहीं है? मुगल साहब ये सही नहीं है? गलत प्रैक्टिस है, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है. और आप बिल्कुल सही, आप जिस पेन पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ये वाकई एक बड़ी तकलीफदेह चीज है कि ऐसा हुआ है कि लोगों के पास जमीनें नहीं होती हैं, जमीनें बहुत थोड़ी होती हैं. मिसाल के तौर पे किसी ने इनिशियल जमीन 100, 150, 200 कनाल जमीन ले ली है, उसको अगर किसी अदारे के साथ कहीं रजिस्टर करा भी लिया है या कुछ ऐसी चीज केस पुट अप कर भी दिया है, तो वो मतलब 200 कनाल जमीन उनके पास होती है, तो 2-2 हजार कनाल, 3-3 हजार कनाल जमीन इस सोच पर बेच देते हैं कि जब पैसा आएगा तो हम आगे बाइंग कर लेंगे, हम आगे बयाने कर लेंगे, हम आगे कुछ चीजें कर लेंगे. दे हैव प्लान. मतलब जो सही लोगों की बात करो, जो तो है ही फ्रॉड, ये टोटल गलत काम करते हैं. आप एज ए इकोनॉमिस्ट इसको फ्रॉड सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी बात जायज है कि जब एक चीज आपके पास है ही नहीं, आप उसके मालिक ही नहीं है, तो आप उस चीज को बेच कैसे सकते हैं? यही दुनिया का कानून है और यही शरई कानून भी यही है कि आप उस चीज को बेच सकते हैं जिसके आप मालिक हैं, जो आपके कब्जे में है, वो आप चीज किसी को बेचेंगे. और फाइल मतलब सरासर गलत नहीं है. अगर आपके पास 1,000 कनाल जमीन है, उस 1,000 कनाल पे प्लानिंग करके मिसाल के तौर पे उस पे 500 प्लॉट निकले और 500 प्लॉटों की आप फाइलें बेच सकते हैं. वो फाइल एक हकीकत है, वो फाइल आप उसकी किस्तें अदा करते हैं, आप उसको और डेवलपर आपको डेवलप करके दे देता है. लेकिन जो बात आपकी है वो बिल्कुल ठीक है कि मुगल साहब 20 साल लग जाते किस्तें देते हो. खुदा के वास्ते ये कहाँ की शराफत है? दुनिया में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अरसलान साहब, यू आर अ लॉयर, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड अनलेस इट इज द बाइंडिंग डेट. अगर आपने खला में कॉन्ट्रैक्ट लिखा है तो वो लीगली नॉट वायबल है. यहाँ खला में कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है कि जी अब्बास साहब को अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह मिल जाएगी. Date and location. Date and location. Location, time for performance. These are the 3 requirements. यहाँ है ही नहीं. open-ended contract. शाहजहां डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब यहाँ पे ना बार बार ये प्राइवेट पार्टिसिपेंट से ये वही शिकायत के एनओसीज के प्रोलॉन्ग प्रोसेस, एनओसीज पे ज्यादा वो कर रहे थे. एनओसीज का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? वो यही है कि दे आर नॉट लैंड ओनर. हम इनसे कहते हैं कि यू आर नॉट ए लैंड ओनर, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दे. दीज आर माय रिक्वायरमेंट्स. अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे देन आई विल प्रोसेस योर एनओसी. उसमें क्या होता है यही कि दे आर नॉट ओनर ऑफ द लैंड, they are having only 5 canal or the application is submitted for 1,000 canal. वहाँ पे उन्होंने फाइल बनाई हुई है 5,000 फाइल्स अगेंस्ट 1,000 canal. अब उसमें हम इनको करके देते नहीं है.
then they ask کہ وہ جی CDA تو NOC نہیں دے رہا ہے, وہ نہیں ہو رہا ہے, وہ نہیں ہو رہا ہے. Then we ask them کہ آپ اپنا فائنینشیل ہیلتھ بتا دیں, آپ اس میں سے کنزیومر رائٹس اور یہ چیزیں, وہ سارے جتنے بھی اوبلیگیشنز ہیں وہ they hide these things. جب وہ hide these things تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ the NOC is not issued to them. جب NOC ایشو نہیں کرتے then they talk against ادارے کے government institutions are not working, bureaucratic وہ ہے, though there are bureaucratic hurdles وہ ہے, there are officers, there are many problems, but still جو ایک طریقہ کار ہے requirements, they do not fulfill those requirements and they are asking for NOC at earliest. تو یہ اس میں سے ایک ایشو ہے. نیکسٹ میرا اس میں یہ کہ تنویر مغل صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ سپوز آپ نے ایک پلاٹ سیل کر دیا اینڈ یو ڈیڈنٹ ہینڈ اوور دا پلاٹ ٹو دا الاٹی, اور اس میں سے 10-20 سال گزر گئے, اینڈ ویئر از دا انٹرسٹ ریٹ, آپ کا پریمیم اور وہ, اینڈ دا ڈالر, اور اس کے ہمارے جو فائٹ چل رہی ہے ٹگ آف وار بٹوین دا ڈالر اینڈ دا روپی, اور مارکیٹ ڈیویلویشن, اور یہ کر کے اس الاٹی کو سوسائٹی میں کیا ایک وہ دیا جا رہا ہے کمپنسیشن, وہ تو اسی لیے پھر بعد میں آ کے کورٹ اور گورنمنٹ اداروں ریرا اور یہ تب ایکٹیو ہو جاتے ہیں جب اس کی وہاں پہ رائٹس کی وائلیشن ہو جاتی ہے, اس کو وہ چیزیں نہیں ملتی, دین دے کمز ٹو دا گورنمنٹ کہ اب ہمیں آپ وہ کر کے دے دے, ان سے پیسے یا لے کے دے دے یا وہ لے کے دے دے. تو ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ایسا کیا وہاں پہ پروسیجر ہے کہ وہ الاٹی کو یہ کمپنسیٹ کر لے؟ جی شاہ جی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں اور بین پاکستانی ہمارے حقوق نہیں ملتے ہیں ہمیں, اور یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ تو مطلب ہم لوگوں میں مطلب ریئل اسٹیٹ کے اندر جو کریڈیبل لوگ ہیں جو صحیح کام کرنے پہ یقین رکھتے ہیں, ان کے پاس NOCs نہیں بھی ہوتے, اگر انہوں نے صحیح کام کر لیا ہے تو اگر کسی بندے کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی ہوئی ہو تو اس کو ہم اپنی کریڈیبلٹی فار دا سیک آف اور کریڈیبلٹی ہم اس کو جو ہے کسی نہ کسی طرح سے اکوموڈیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں, کیونکہ ہم لوگ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ مین فریم کام کر رہے ہیں, DHA کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب بحریہ کے بہت سارے ایسے متاثرین ہیں جنہوں نے بہت پرانی بکنگز کرائی تھی, ان کو چیزیں نہیں ملی, تو کبھی اس کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بحریہ ٹاؤن نے کہا کہ مثال کے طور پہ فیز 9 بکا تھا, تو فیز 9 کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے تھے, تو اس میں جتنے اینڈ یوزر تھے جو پلاٹ لینے کے خواہشمند لوگ تھے, تو ان سے اپلیکیشن لے کر فیز 8 کے اندر ان کو پلاٹ دیے گئے, اور جن لوگوں کو پلاٹ مل گئے فیز 8 کے اندر وہ خوش ہو گئے, کیونکہ ان کو ان کی پیسے کے اوپر بڑا اچھا ریٹرن مل گیا, ان کو چیزیں مل گئیں. ٹھیک ہے, اور آف کورس جن کو نہیں ملی وہ بےچارے مطلب ظاہرہ خراب ہوئے. اب جب یہ جو بات, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کمیونٹی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا میکنزم ہو جس میکنزم میں حقوق اور فرائض سب کے بیان ہو, کسٹمر کے بھی حقوق و فرائض ہوں, بلڈر کے بھی ہوں, ڈیولپر کے بھی ہوں, ریئلٹر کے بھی ہوں. پاکستان میں میس یہ ہے کہ ادارے جو ہے وہ کلیئر سٹانس کے ساتھ ہمارے سامنے تو کام کر رہے ہوتے, ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور چیزیں اس طرح سے واضح مطلب ایک دو ٹوک چیز ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ زمین کے کاغذ ہے, یہ فیس جمع کرائیں, یہ چیز جمع کرائیں, اور آپ کا یہ کیس فارورڈ ہو جائے گا. تو وہ وہاں مختلف قسم کی چیزیں ہم فیس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی کھل کے ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو معاملہ سارا واضح ہے کہ جب تک ہم لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی ان سارے معاملات کو لے کر, گورنمنٹ کی بھی نیت ٹھیک نہیں ہوگی, کمیونٹی کی بھی نیت ٹھیک نہیں ہوگی, اور ہم ایک ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے تو یہ میس ہی رہے گا. ہم کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی چیزیں کمپلیکیشن کا شکار ہوتی ہیں. تو لیکن پاکستان کو چونکہ ہم نے ایک عظیم ملک بنانا ہے, اس لیے ہم اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کی کنسٹرکٹیو انداز میں ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں سولوشن مل جائے گا. عظیم ملک پاکستان میں ہم نے کوئی نہیں بنانا, ہم اس ملک کو ڈبانے کی فکر میں ہیں, کوئی عظیم ملک نہیں بنانا چاہتا. غلط باتیں نہ کرے, اللہ کے سامنے غلط باتیں نہ کرے, ہم سب اس ملک کو ڈبانا چاہتے ہیں. That's all we want. We are greedy people. We don't want to build anything. Yes, Stephen Moranes will tell us something from Canada. Stephen Moranes, please go ahead. Just, I don't know if you can hear me. We can hear you. We can hear you fine. Okay. Do you want to unlock my video or? Please go ahead. Ji, I'm encouraging you unlock that. Ji. Yeah, I thank you. Mm-hmm. Go ahead.
Thank you very We can much. see you now. We can see you now. Thank you very much. Dr. Haider, Murtaza, and myself, we write a weekly column in Canada for the National Post, and we're probably the most read columnists in the real estate industry. We've done a lot of research and review of what's happening from a regulatory point of view, and I'm very interested to see sort of what's progressing within your country. And you know, we have some, you know, I think good thoughts and experience and insight on sort of what's happening in North America. I've been a real estate broker both in Ontario, which is a province in Canada, and Florida, which is a state in the United States. When you talk about regulations, there's two areas of regulations that sort of are happening. There's the regulations of the actual you know, construction industry or new home building, whether it's condominiums, high rise or low rise. And there's the regulation of the real estate practitioners. In other words, those who help people buy and sell properties, whether it's residential, commercial, industrial, investment, etc. And generally throughout North America, I'm not 100% familiar with your sort of statutes and regulations and acts currently, but you know, you must be licensed by a state or provincial authority. Canada as provinces and United States are states. You must be licensed by the state or province to trade in real estate. The only person who's exempt from being licensed to trade in real estate is basically private sellers. So you can sell your own house, you don't need to be licensed, and attorneys or lawyers in the course of their practice. This is throughout the North America, and I'm talking about United States and Canada. And then sort of within that structure has risen, basically I call them like stock exchanges or real estate exchanges. They're called multiple listing services, and primarily for residential resale. In Canada last year, there was about 700,000 homes, condominiums and houses. This is resale or used real estate that's sold through a multiple listing service. And in the United States, it's about 5.5 million. So kind of Canada's 1/10 the size in population and proportionally kind of the same in trading. And except these real estate MLS exchanges are unregulated. They're run by private corporations, nonprofit corporations, which are local real estate boards, which are made up of real estate registrants, and they run these MLSs. And there's a whole bunch of problematic issues around this. You know, the question is, if you list your house for sale, who actually owns that data? Because you've probably read about it. The biggest play right now is these prop tech companies and the boards themselves are trying to monetize the information. So if, say, you know, in any particular point in time, there's, you know, in Canada, there could be 200,000 active listings. All these local real estate boards that run MLS, which are they basically run on their own. There's no accountability to the state or provincial regulators, and they're running these stock exchanges for real estate unaccountable. And the two major issues right now, and I'm not sure what, you know, the comparable body would be in Pakistan, but there's the Competition Bureau in Canada, and there's the Department of Justice and the FTC, the Federal Trade Commission in the United States. The two biggest problems with real estate trading, and this isn't new home construction or condo, which is sort of a separate specialty unto its own. The problem with the real estate industry, there's two things, and one of them is there's a class action going on in the United States right now. The way the industry has set the table on how trading goes, they make the seller of a property pay the commission, offer and pay the commission to the buyer's agent. It's counterintuitive. So just think about this. You're selling your house, you list it on an MLS exchange, you're paying, you know, say the going rate's 5%.
and you're offering 2.5%, and the fees get negotiated, of course, you're paying 2.5% to the buyer's agent. North America, believe it or not, is the only jurisdiction where the commissions aren't separated. The UK, Italy, Israel, France, all these places, the commissions are separated. So you as a seller pay the buyer's agent, pay the seller's agent, and you as a buyer pay the buyer's agent. Makes the most sense. So this is now all subject of a class action because, you know, the damages are the buyer's commission that a seller's been offering and paying, which has nothing to do with their ability to sell the house. And more importantly, you know, they're basically by their seller's agent are told, you know, you got to offer 2.5% or no one's going to show your house, all this kind of anti-competitive stuff. And at the end of the day, you never get a chance to negotiate the commission with the buyer's agent or even understand what services they're offering to you. That is one of the major challenges of how real estate is trading on the resale market. The other biggest problem right now, because the market's been hot, you know, through COVID and the demand and low interest rates, that they basically, the industry makes their own rules, which are, you know, self-serving. But the biggest problem is 71% of all houses that sold, I'll just give you a microcosm, 71% of all the houses that sold in the Greater Toronto area, which is a large sort of metropolitan area on multiple listing in December of 2021, sold over asking price. So it meant there's multiple offers. The industry is protected and they have rules. And the rules are if there's multiple offers, you can't disclose the prices. In other words, it's blind bidding and it's very unfair. I mean, a system should be fair for both sellers and buyers. And last week, I know 2 examples in Toronto, there were 2 properties that sold, one with 100 offers, one with 65 offers, going for hundreds of thousands of dollars over asking. And there's no price guidance to a buyer. So your agent will say, look, make your best offer. You may not get another shot. And people are basically paying $50,000 or $100,000 more than the second best offer. It makes no sense. And open bidding should be, you know, mandated. Prime Minister Trudeau in the last federal election, I mean, he currently has a minority government. It's a parliamentary system in Canada. He made a campaign promise, which he was a little offside on. He basically said, I'm going to criminalize blind bidding. You know, unfortunately, he didn't maybe realize that real estate trading is not a federally sort of oversight matter. It's determined by the provinces in Canada and by the states in the United States. So, you know, these are some of the things that, you know, based on our sort of unfortunate circumstances and experiences in the United States, are things that should be taken into account when you're looking at real estate regulatory authority and practices and oversight, especially on the resale trading side. There's a whole bunch of other issues, obviously, for new construction. And I appreciate the opportunity to kind of present those comments, and Dr. Hayter and myself are happily available to, you know, speak to any individuals or groups and share our experience and knowledge that we've gathered. Thank you, Stephen. I think both points are very well sort of taken. What we'd like to consult you on is 2 things. We are doing something similar in PIDE, and I've talked to Murtaza about it. That how do we go about initiating multiple listing service in Pakistan? Quite frankly, the biggest problem right now is there is absolutely no information on the real estate market, no information on real estate. I'll tell you the craziest thing in the world, which I can't understand why. You go through any Pakistani city and they're all bigger than anything in the North America. Our cities are now bigger than New York, all of them, most of them, not all of them. Anyway, point is there's no for sale sign anywhere.
which is a strange thing. There's no for sale sign anywhere. So we don't know what is selling at all. At the same time, there's no information anywhere on what is selling. And nobody works on that. Secondly, the transfer is so difficult. And thirdly, leave alone blind bids. We don't even know what the property is worth. I mean, somebody can come and tell me, hey, this property is selling. And I say, okay, where are the comparables? What was the last property that was sold here? Nobody knows. So the government is deliberately keeping people blind on real estate. There is no, and what the government does instead is floats two prices, which are absolutely bizarre. They've got no reality, nothing to do with the market. Government bureaucrats sit and make prices and say, hey, this is what the property is worth. So the seller, the buyer comes along and says, hey, this is what the government says the property is worth. And that's half the worth of the property. And then everybody's speculating, is my property worth $1 million? Is it worth $2 million? Is it $3 million? So it's a crazy market and nobody is making any effort to fix it. Any ideas on that? Well, I think you need probably the government has got to take the leadership in trying to come up with a more open and transparent system for everyone. No, the government actually facilitates the lack of transparency. Government actually works to create lack of transparency. Well, it's sort of economics 100. A free market system should be lots of information, lots of buyers, lots of sellers. It's everyone is sort of unfortunately penalized with with the lack of transparency. I mean, New York City, just so you know, for many, many years didn't have a multiple listing system. So New York City operated exactly as all of Pakistan. I mean, nothing was listed. There was no multiple listing service. People sort of guarded the information about properties. They didn't share their listings. I mean, if you want to get the most for your property, it should be exposed to the greatest number of people in an open and transparent way. And if that doesn't occur, then you've got basically a dysfunctional marketplace, and people are penalized for that. People will just as likely undersell and overbuy as with respect to, listen, so we've got challenges now on sort of the lack of oversight or trading rules that should be open and transparent. It's like the stock exchange. I mean, someone says you want to buy a share of Amazon, but they're not going to tell you the last bid and ask price, just make an offer. It's ridiculous. Yeah. Thank you very much. Thank you, Stephen. Thank you. We'll be in touch with you. We'll talk to you and Moses and see what we can do. Thank you, folks. I think it's been a great discussion. We figured it out. As usual, the government is bungling about copying people without thinking. As usual, there is no thinking in Islamabad. It's just, one bureaucratic mess. Shah Jahan Sahib, you said you'll consult the World Bank. I would urge you to consult the PIDE rather than the World Bank. The World Bank is not really an expert in Pakistan. We turn to the World Bank for everything. Stephen, do you turn to the World Bank for real estate advice? Do you turn to the World Bank for advice on the country? Pardon me? Do you turn to the World Bank for advice on real estate markets and on other things? Well, all the banks in Canada are giving real estate. No, the World Bank. The World Bank. The World Bank, we haven't, we referenced some of their stuff. We haven't consulted with them at this point, no. Exactly. So Shah Jahan Sahib, please note, nobody talks to the World Bank for everything. We talk to the World Bank before going to the bathroom. We talk to the World Bank before drinking water. We take permission from the World Bank on everything. We don't think, because we are a monkey nation. Basically, we just copy people. Thank you, folks. I hope someday we'll wake up and do our own thinking and really begin to configure our market. The point was to configure the market, not to make another authority. We make authorities without thinking about the market. Thank you all. It's been a wonderful discussion. Sorry we ran over time. All the best. Bye-bye. Khuda Hafiz.